Hello, 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 check, hello, 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 check, hello, 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 check, hello, hello, hello. Hello and welcome once again at Mauka 365 Tussle Premier League 2023. We are at NL Sports Ground, Dahisar East. The first match going on between Raging Bulls up against Black Knights, where toss went in favor of Raging Bulls, and they have decided they're going to chase down the target. 1 over completed, and Black Knights are 7 for none. The two openers out in the middle, Praveen and Vinay. The very first over was bowled by Vishal. Now the ball is in hand of Pratik Mane, an all-rounder from Raging Bulls, who is brilliant with a new ball.
has the ability to swing the balls in both way. Right up there, looking for swing, bowling full length delivery into the driving zone of the batsman. He leans forward and driven it through. Should have been stopped by the fielder at cover, but he misfields, and that's a boundary for the batsman. Praveen Sanil, very experienced batsman, lots of games behind him. Calm-headed, very composed guy, and technically very sound. Full toss delivery. This time the timing wasn't so good. Just a push to the offside to get a single. This is important game for Black Knights. They are a good team with no luck in this tournament so far. Have lots of promising talent in their lineup. Poor delivery. An excellent shot. I believe it has gone all the way. Full toss delivery. It is a maximum, I reckon. Yes, it is. The fielders are confirming it. So does the umpire. The first maximum coming from the willow of Vinay. The ball was sitting nicely under his eye and a rip of the wrist. And it was a flat maximum over the square leg region. Not the first time we have seen a bowler bowling with a new ball and trying to get some swing. Ending up bowling a full toss delivery where batsman capitalizing. After that delivery, they have a change in field. This is good delivery. Though it was a half volley, but the ball is hard at the moment. If you cannot time it well, it can go against you as a batsman. Going down the leg this time. Probably looking to generate some extra pace this time. Losing his radar. And good bit of work done by the wicket keeper. Excellent delivery. Outside edge and taken at sleep. The only slip was position at first slip, and he did brilliantly. Bending and pouncing it on his right, taking a good grab, clean catch. And Pratik Mane, he doesn't take a lot of time to provide a breakthrough. He has drawn the first blood, and it's the batsman Vinay is going back to the herd after scoring 11 of 6.
जी हाँ, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौका 365 टसल प्रीमियर लीग एडिशन 2 में। बहुत ही बढ़िया विकेट प्राप्त किया था वहां पर प्रतीक वाह ने। बहुत ही अच्छे गुड लेंथ पर गेंद पिच हुई थी, हल्की सी बाहर की तरफ निकल रही थी और बल्लेबाज ने ऑन द अप ऑन द राइस खेलने का प्रयास किया था ऑफ साइड में। बाहरी किनारा एक मोटा एज बल्ले का और बहुत ही बढ़िया कैच लपका गया फर्स्ट स्लीप पर। और अब आउट होने के बाद विकेट, पहला विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए हैं शिखर। एक और बढ़िया बल्लेबाज ब्लैक नाइट्स के बैटिंग लाइनअप में। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं ये, एक्सप्लोसिव बैट्समैन माना जाता है इन्हें। पहले गेंद से ही अटैक करना पसंद करते हैं। देखना होगा यहां से किस प्रकार का बल्लेबाज का अप्रोच होता है। बढ़िया गेंद, विकेट लेने के बाद गेंदबाज का मनोबल अपने आप बढ़ जाता है और वही हमने देखा। आखिरी गेंद बहुत ही बढ़िया टप्पे पे गिरने के बाद अंदर की तरफ हल्की सी आई, लेकिन बल्लेबाज शिखर अपना पहला ही गेंद खेल रहे थे, गेंद की लाइन को कवर किया और रक्षात्मक तरीके से सॉलिड फॉरवर्ड डिफेंस। तो 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप सभी दर्शकों का, खेल प्रेमियों का स्वागत है एक बार फिर टसल प्रीमियर लीग 2023 एडिशन 2 में। और हमारे सभी व्यूवर्स जो कि हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर, लाइव कवरेज चल रहा है इसका, इस मैच का, उनका भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं सुनील रॉय। आप हेलो हेलो हेलो, चेक। तीसरा ओवर गेंदबाजी जारी रखेंगे विशाल, जो कि पहला ओवर बेहतरीन रहा था इनका। और दूसरे ओवर के पहले गेंद में अगर देखें तो एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा रनअप नहीं है, लेकिन कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, डेक को हिट करते हैं ये। और पहली गेंद में जो उछाल प्राप्त हुई उससे बल्लेबाज के मन में एक कंफ्यूजन पैदा कर रही होगी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन शॉट बल्लेबाज द्वारा। बहुत ज्यादा ताकत बिल्कुल भी नहीं लगाने का प्रयास किया, मात्र बल्ले का फेस ओपन किया और देखा जैसे ही कि एक बहुत बड़ा गैप है पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में। उस गैप को भेदा बल्लेबाज शेखर ने, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट। ये बढ़िया गेंद। तो इस विकेट की भी अगर हम बात करें तो सुबह के पहले सत्र में कुछ 1 घंटे तक या फिर आधे घंटे 40 मिनट तक कह लीजिए, विकेट थोड़ी ट्रिकी प्ले होती है। अनगिवन बाउंस जरूर है इस विकेट पर। कुछ गेंदें काफी लो रहती है और कुछ गेंदें उसी टप्पे पे गिरने के बाद दोहरा उछाल प्राप्त करती है, और ये इस बात का ध्यान रखना होगा बल्लेबाजों को। खराब गेंद और बेहतरीन शॉट, बहुत ही बढ़िया पिकअप किया था यहाँ पर शिखर ने, बहुत जल्दी लेंथ को पिक कर लिया था, बहुत बढ़िया पोजीशन में आ गए थे और बहुत ही बड़ा मैक्सिमम ये
लंबी बाउंड्री है ऑन साइड में मिड विकेट के रीजन में, और उस बाउंड्री को बहुत ही आसानी से क्लियर कर दिया है। यह हमने जैसे पहले भी कहा कि शिखर एक विस्फोटक बल्लेबाज है, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, और ये जब तक क्रीज पर रहेंगे रनों की गति बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली है। अब इस मैक्सिमम के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हल्की सी दबाव अब गेंदबाज पर बनाते हुए बल्लेबाज। ये बढ़िया गेंद, एक बार फिर उसी टप्पे पर गेंद गिरती हुई जो पहले और तीसरे गेंद पे फेंके थे। और तारीफ करनी होगी बल्लेबाज की भी, अनइवन बाउंस जरूर है, ये इस बात का वो जानकारी रखते हैं, और सॉफ्ट हैंड से खेला था। कुछ बल्लेबाज होते हैं मैक्सिमम लगाने के बाद जब बहुत अच्छे ले में आप बल्लेबाजी करते हो तो आप हर गेंद पे बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करते हो, लेकिन शिखर नहीं। ये वेट करते हैं, इंतजार करते हैं खराब गेंद का। एक और खराब गेंद जरूर मिली थी, हाफ ट्रैकर की डिलीवरी, बहुत बढ़िया शॉट भी लगाया था, लेकिन सीधे रेजिंग बुल्स के कप्तान के हाथ में, जो कि पॉइंट पे खड़े हैं। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, एक एथलीट है ये राकेश पुत्रन, रेजिंग बुल्स के बहुत ही चहीते खिलाड़ी। 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 30 for 1। और ब्लैक नाइट्स की तरफ से ये दो बल्लेबाज प्रवीण और शिखर, दो बल्लेबाज अलग शैली के। प्रवीण जो कि तकनीकी बोलते हैं, टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है, बहुत ही बढ़िया हेड पोजीशन इनका। और वहीं पर शिखर, इनकी क्या ही बात करें, काबिलियत है इस बल्लेबाज के पास 360 बोलते हैं ना, 360 डिग्री में बल्लेबाजी करने का, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही शानदार बल्लेबाज शिखर का। और वहीं प्रवीण, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, वी में खेलने के लिए प्रसिद्ध। हल्के से मिसफील्ड वहां पर पॉइंट में खिलाड़ी द्वारा, और मौका मिल गया बल्लेबाज को छोर बदलने का। तो एक से एक धुरंधर दोनों ही टीम में, चाहे हम रेजिंग बुल्स की बात करें या ब्लैक नाइट्स की बात करें, और इसीलिए ये मुकाबला एक कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों ही टीम बेहतरीन टीम है। बढ़िया गेंद प्रतीक माने द्वारा, और इस गेंद के बाद जब फॉलो थ्रू कंप्लीट किया उन्होंने, और जिस प्रकार की ये गेंद ने कैरी किया विकेट कीपर तक, काफी खुश किया होगा गेंदबाज को, कॉन्फिडेंस एक बढ़ाया होगा उनका। लेकिन बढ़िया गेंद।
बढ़िया गेंदबाजी हो रही है प्रतीक माने द्वारा इस ओवर में। मात्र 1 रन आए हैं इस ओवर में अब तक, लगातार 3 डॉट गेंद। और शिखर जैसे बल्लेबाज को बांध के रखा है, लगातार 3 डॉट गेंद। बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेलते नहीं है ये। एक बार फिर दोहरा उछाल, बढ़िया तरीके से खेला था इस गेंद को। एक स्लिप जरूर तैनात थी, लेकिन ऑलमोस्ट गली के क्षेत्र से गेंद निकलते हुए थर्ड मैन के हाथों में। बहुत ही बढ़िया ओवर घटा है। कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो वो कंसिस्टेंसी देखने मिली है जिस कंसिस्टेंसी की गेंदबाज अपेक्षा करता है। बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी बेहतर। गेंद के मेरिट पर बल्लेबाजी हो रही है ये, और ये अच्छे बल्लेबाजी की निशानी है। जब गेंदबाज अच्छे लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करता हो तो कभी कभी बल्लेबाज ईगो पे लेकर बल्लेबाजी करता है, लेकिन ये की कहानी इन बल्लेबाजों के पास नहीं। ये इंतजार करते हैं खराब गेंद का, और जैसे जैसे विकेट पे धूप खिलेगी, विकेट थोड़ा हार्ड होता जाएगा, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होता जाएगा। और ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं, ये काफी मैचेस खेले हैं ये, और ये चौथा मुकाबला है ब्लैक नाइट्स का। और अगर हम बात करें तो अब 3 मुकाबले खेलने के बाद एक बल्लेबाज जो अच्छा बल्लेबाज होता है अनुमान लगा लेता है कि उसको अपनी पारी को पेस कैसे करना है, कब उसे अपना गेयर शिफ्ट करना है, कब बड़े शॉट्स खेलने हैं, अपने हाथ खोलने हैं, किस गेंदबाज को अटैक करना है। 4 ओवर का खेल पूरा, स्कोर है 33 रन, 33, एक विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, हरमीत सिंह आए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज से, एक ऑफ स्पिनर। और स्पिनरों का बोलबाला रहा है इस विकेट पर। अगर हम मीडियम पेसर्स या पेस बॉलर की बात करें तो बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई है जितनी स्पिनर्स को प्राप्त हुई है। और पहली ही गेंद बहुत ही बढ़िया टप्पे पर गिरती हुई है गेंद। बहुत ज्यादा हवा नहीं देते हैं, ऑलमोस्ट 85 to 90 kmph की स्पीड में गेंदबाजी करते हैं ये। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, बहुत ही बढ़िया स्पिनर है हरमीत सिंह। और T20 फॉर्मेट में 5वां ओवर करने आए हैं, तो ये दिखाता है कि कप्तान को कितना भरोसा है ये हरमीत सिंह पर। लगातार 3 डॉट गेंद, और जितनी ज्यादा बिंदु गेंद होगी, जितनी ज्यादा डॉट गेंद होगी, उतना ही दबाव बल्लेबाज पर बनता जाएगा। हल्की सी जगह मिली थी, इसे कट करने का प्रयास, लेकिन टाइम लाइन के काफी बाहर। आज के हमारे 2 मैच ऑफिशियल साइली और मिस्टर निनाद, दोनों ही बहुत ही बढ़िया अंपायर आज अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं एक बार फिर। कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव कर दिया है,
कवर के क्षेत्र में एक रन दौड़कर पूरा कर लिया है। दूसरे रन के लिए जाना चाहिए था या नहीं, ये तो दोनों ही बल्लेबाज बखूबी जानते हैं। हालांकि यहां से ऐसा प्रतीत जरूर हो रहा था कि काफी समय था बल्लेबाजों के पास दूसरा रन पूरा करने का, लेकिन अंत समय में दोनों ही बल्लेबाजों ने सही समझा कि रिस्क उठाने की जरूरत है नहीं, एक रन से संतुष्ट। कट किया है, और इस बार अगर हम फील्ड की बात करें तो एक बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। गेंद सीधा उनके हाथों में, रन लेने का मौका नहीं। आखिरी गेंद इस ओवर की अभी भी शेष। बैकफुट पे जाके इसे पंच कर दिया है, शॉर्ट बाउंड्री को टारगेट किया है, कोई भी मौका नहीं इस गेंद को रोकने का किसी भी खिलाड़ी के पास। 4 रन मिल जाएंगे आखिरी गेंद में। दूसरा बाउंड्री लगता हुआ शिखर के बल्ले से, और 5 ओवर के बाद अब स्कोर है 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 39 for 1। So 5 overs gone, score is 39 for 1, and change in end. Pratik Mane will be bowled over. He has bowled 2 overs, conceded 15, and the only bowler who has got a wicket so far from Raging Bulls. He'll be bowling from the media end to the batsman Praveen Sanil. Alongside him, Shikhar, who is at the non-strikers end. Both the batsmen are playing beautifully at the moment, stitching a partnership. Keeping the wickets in hand will be the key in this inning. They still have lots of pinch hitters in their batting lineup who is yet to come. Has this come off any part of the batsman? No, it has not. Excellent wicket keeping by the wicket keeper there. It's not easy task to be a wicket keeper, standing behind the stumps, keeping your eye on the ball till the very end of the inning, and at the same time it requires good fitness skill. But at the moment the length is good by the bowler. The line is the one area where he has to be concerned about. This one way outside the tram line, and once again wicket keeper in the picture, showing some good reflection behind the stumps.
Excellent delivery. So this is almost the length. The length is same, but the line was excellent this time from Pratik. Almost squaring up the batsman. Was looking to play a back foot punch. Misses it completely. Full toss delivery. And he had just guided it to on the onside, helping it on its way to the square leg region for a boundary. Lovely shot off the back foot this time. And between point and third man, Praveen Sanil. Now he is all set, now showcasing why he is rated so highly in the batting lineup of Black Knights. It wasn't an easy shot, let me tell you. These are the shots, sometimes you can easily nick it through the keeper. But the batsman, you talk about his head position or the hand-eye coordination, it was spot on. Waited for it and cuts it firmly to take the ball into the fence in no time. Excellent batting. Once again, a half-tracker delivery, but this time the batsman finding the fielder at point. 49 is the score. We are into the sixth over. And talking about the batting stance of Praveen, he gives a feeling of a bit of a nostalgic vintage batting stance. Just like, look at the way he leaves the ball. It's not the modern day cricketer does. When you talk about the difference between the modern day cricketer and the cricketer who used to play in 70s, 80s or 90s, is that kind of play. Fix his length very early. Has it come off anything? No, it has not. It has gone miles down the leg. Once again, brilliant effort by the wicket keeper, but this time he couldn't save it. It was bowled with extra pace this time by Pratik Mane, but once again the line wasn't good. 5 runs will be added to the tally of Black Knights and their score is 54 in 5.5 overs. Better delivery. And equally well played by batsman Praveen. He knows that they have got the runs.
It was a big over, 15 coming in that over. 6 overs gone, 54 for 1. Smitesh Patil is into the attack. Another spinner in Raging Bulls bowling unit. A bit slower one in the air. Batsman plays a back foot defense for no run. Smitesh Patil, he has a best figure of 5 wickets for giving just 8 runs away. No timing whatsoever. And fielder is there at the boundary. What a shot! Wasn't a bad delivery at all by any means. But he came across the line and was in a brilliant position to pull that away on the onside, finding his gap to the perfection. This is brilliant batting. So good to see Praveen Sanil batting in a full flow here. Good delivery. A touch fuller one this time around the off stump, and batsman respecting that good delivery. Lovely delivery once again, but this time probably going down the leg. We'll still wait for the umpire's decision. Yet is his extension of an arm, and even the wicket keeper couldn't save it. He has got his hand on its way, but couldn't stop the ball and the batsman to take one. This one came in sharply to the right hander, and because he was playing on the back foot, he has got lots of time. Good use of the wrist, just clipping it on the onside to take one. And that's a wicket.
against the run of play. Was deep in the crease, was looking to find the gap between Sleep and Point because there was no third man, and he was looking to just steer it to get past the Sleep, but top edge, outside edge, and straight in the safe hands of the fielder standing at Sleep. A wicket of a good batsman, Praveen Sanil, goes back to the hut after scoring a brilliant 23. He played some eye-catching stroke, and as long as he was at the crease, the batting was looking so easy. But that's a big blow for Black Knights. 7 overs gone, 62 for 2. So one good batsman goes out, another comes in. Sandeep, who is at the non-striker's end, alongside his partner Shikhar, who is ready to face Chaitanya from Raging Bulls. Half-tracker delivery, cut away. But the fielder in the deep fills it. Enough time for the batsman to take one. Lovely delivery. This one keeping a bit low, and it came in sharply once again to the right-hander. And he played well to negotiate it. Gives a bit of in. We're still waiting for the umpire's decision. For once, it looked like the ball has castled onto the stumps. But no, it's not. The wicket keeper dislodges the bail. But the batsman was safe in his crease. This is good variation in length by Chaitanya in this over. He gave some tossed up delivery, bowled a flatter, a quicker, not letting the batsman predict him. And that's a wicket. Too many dot balls does help the bowler, and eventually he gets rid of another good batsman, Sandeep, this time. He couldn't do much with the bat today. He likes to attack right from the ball one. But the bowler, Chaitanya, he was spot on with his variations, with his length, with his line. And ending up taking a good wicket. This was brilliantly set up by the bowler. And full marks to him. Bowled some deliveries which went away from the right-hander, and this one came in sharply. It didn't turn much, and the batsman who was at the back foot was looking to cut away through the off, mixing the line completely, and also ball keeping it a bit low, helping the bowler to get a wicket. Wicket number 3 for Raging Bulls, and
Lovely delivery. Floated delivery at the stumps, and batsman playing with no intention of taking runs. And of a successful over, a brilliant over from Chaitanya, considering only a single and a wicket. It was gone. 63 for 3 it is for Black Knights. Smitesh will continue from the media end, bowling the ninth over of this inning, the second one for him. Full toss delivery. Bit of a wrist work from the batsman. Right from the mid of the bat, but straight in the fielder's hand in the deep. Shikhar, he will be the key for Black Knights. Lovely placement. Will it beat the fielder? No, it will not. Bending down at the right time. Running to his left, stopping the ball. Two full tosses, and all man can get is a single. Lovely shot. Driven down the ground straight onto the stumps at the non-striker's end. And this phase between 7 to 15 overs, this is a bit of tricky phase for any batting side. And that's why it's important to have a target in your mind. You need to be calculative and is this a wicket? Yes, it is. In no time, umpire has his fingers up. Batsman is not happy. He is not at all happy, and this could be the big moment in the game. Shikhar, the danger man, departs. He looked so good throughout his inning, right from the ball one till the very end. He was timing brilliantly. But this one, he was looking to play across the line and face the prize. And all of a sudden, Black Knights, they are looking in a bit of trouble here. They were in a good position at one time, scoring at almost 9.50. But one has to say, Raging Bulls bowler, they have been spot on. Their spinners particularly, bringing them back in this game. New batsman in is Vishrant.
And Shehbaz alongside him. Two new batters out in the middle for Black Knights. Big responsibility on their shoulder. They need to play some overs out in the middle together and have to make sure that the run rate should be in check. Bushran, the tall and lanky guy who bats with a long leveler. Lovely delivery and a good forward defense coming from the inner side of the bat, going on the onside. And batsman is off the mark with single. Full toss delivery, swept away on the side, on the onside, and it will beat the fielder in the deep. That's a boundary for Shehbaz. Picked his length very early as soon as he sees the flight given. Goes on one knee. And excellent placement on the onside to get a boundary. 9 overs gone. Score is 70 for 4. Chaitanya will continue. He will be high on confidence after his first over. It was a tremendous over, considering only a single, taking a wicket. And it's not easy for any wrist spinner to execute their plans. And the control that he has shown so far is commendable from him. This one a bit shorter, but a quicker one. Full toss delivery once again. Sweeps on the onside, but this time he finds the fielder in the deep. And as a batsman, if you have a sweep shot in your book, it's always a best way to counter the spin. Good shot off the back foot. Pratik in the deep with the strong arm. Was in the air. This time the ball stopping a bit before it came to the batsman, who was way early, almost committed to play that defense. Lovely delivery. This is good bowling. Another end of an excellent over from Chaitanya. He has hardly gave away anything in his 2 overs. End of over 10. 73 for 4, and it's time for a drinks break here.
एक बार फिर हेलो हेलो, अंपायर से निवेदन है कि प्लीज समय का ध्यान रखिए। मात्र 90 मिनट में पारी समाप्त होनी चाहिए। और अगर हम समय की बात करें तो 1 घंटे हो चुके हैं इस खेल को शुरू हुए, और 1 घंटे में मात्र 10 ओवर फेंके गए हैं। तो ओवर रेट काफी पीछे है। रेजिंग बुल्स के कप्तान से निवेदन है कि ओवर रेट्स को लेकर थोड़ा जल्दबाजी करने की जरूरत है यहाँ पर। लेफ्ट आर्म गेंदबाज आए हैं। जेनी शाह ऊंचे काठी के गेंदबाज। रिलीजिंग पॉइंट इनका जो है ऑलमोस्ट इनके सर के ऊपर से होता है। ये देखिए, काफी एयर, काफी फ्लाइट डिलीवरी थी। ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और स्टंप आउट होकर पवेलियन में वापस जाना होगा बल्लेबाज विश्रांत को। जरूरत नहीं थी इस प्रकार के शॉट खेलने की, इतनी जल्दी हुई। इस प्रकार का शॉट अब तभी खेलते हैं जब आप काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हो, आपकी नजरें सेट हो गई हो। या तो कुछ बल्लेबाज इस शॉट का प्रयास तब करते हैं जब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो ये शॉट कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में खेला गया। और स्पिनर जब भी आता है तो बल्लेबाज को मन में एक लालच सी आ जाती है, उसे अपॉर्चुनिटी दिखने लगता है रन बनाने का, बड़ा शॉट खेलने का। लेकिन ये आसान कार्य नहीं है। ये विकेट स्पिनर उसको मदद करती है। और इसीलिए कहा जाता है अनुभव बहुत बड़ा रोल अदा करता है, अहम रोल अदा करता है किसी भी क्रिकेटर, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। विकेट्स को रीड करना, ये जो कला है हर बल्लेबाज में नहीं होती है, और जो इस कला को पाना आपको अनुभव से ही प्राप्त हो सकता है। बढ़िया शॉट बल्लेबाज शुभम द्वारा। आते ही गेंद के लाइन को कवर किया। फ्लाइटेड डिलीवरी जरूर थी, लेकिन हेड पोजीशन और उनका जो बायां पैर था, लेफ्ट लेग, खास करके उनकी अगर टो की बात करें, दोनों ही उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो शॉट खेलना चाहते थे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं बल्लेबाज के लिए। स्कूल क्रिकेट स्कूल हेलो, कट क्यों हो रहा है? अभी चल। Wonderful shot, powerfully struck on the onside, piercing the gap between two fielders. Slower delivery, a half tracker, and batsman pulls it away to fetch a boundary for him. 78 for 5. 11th over going on. This time on the offside, cuts away. But the fielder in the deep, Chaitanya, is there. Fielding at deep cover. Single taken. And the striker will be with Shahbaz. 11 gone, 79 for 5. So Black Knights, they have lost some quick wickets. They were sitting in a good position. At once they were 61 for 1.
but they have lost their last 4 wickets for just 15 runs. Vaibhav Parmar, a medium pacer into the attack. Doesn't bowl with a lot of pace, relies on his line and his length. And this time getting some help from the wicket, stopping at a beat. Struck on the pad and the finger is up. It has been given. It wasn't a confident appeal. It's Shahbaz who will have to go back. This one didn't bounce much. Struck on his pad. He had some words with the umpire and the umpire explained why she gave him out. "79 for 6. Raging Bulls bowler, they are all over the Black Knights middle order at the moment. France is the new batsman walking out. Straight away he was looking it to cut away through the off. Couldn't connect at all. France is an all-rounder who bowls with a new ball for his team, batting at number 8. Beautifully driven. The timing was perfect. The placement was perfect. Everything was so good. And this boundary, it will give lots of confidence to the batter. Another play and a miss. And because the releasing point of the bowler, it's almost below his head, he doesn't bound to get the bounce of the wicket. Dot ball to finish off another over with a wicket. 12 overs gone, 83 for 6. The left-hander will continue. What a grab. It wasn't a wicket-taking delivery, half-taker delivery. Batsman could have played it anywhere. But he found the fielder at short mid-wicket, where the captain himself from Raging Bulls takes a good catch. And this time Shubham going back to the hut after scoring only one.
Now this is some collapse this from Black Knights. And the captain, Rakesh Putran from Raging Bulls. He would be a happy man. Why not? Winning the toss, opting to field. And their bowlers, they have been exceptional. Almost every bowler chipped away with the wicket. Akash is the new batter. Driven through the cover. This is good bowling from Janish. Bowling with a good heart, big heart in fact. Giving lots of flight to the ball. And that's a wicket. This is not a good cricket from the batsman when you have an experienced batsman alongside you. You still have a lots of overs to play. The batsman Akash right from the ball one was looking to attack. Was looking to take on the bowler. This one was a wild slog across the line. Missing the line completely. And the ball rattling the stump. Wicket number 8. And the wicket number 3 for Jenny Shah. What a day he is having with the ball. Sagar is the batsman and what a connection. Right from the middle of the bat. And he's showing to rest of the batter how should you attack. If you want to attack, wait for it. Get underneath the delivery. Was in a brilliant position, playing it late. And when the bowler is bowling a bit of a slower delivery, this is how you play. Wait for that delivery. Playing late is the key there. Maximum to start off the inning. Sagar, who is also a brilliant bowler. But this time today, his team needs him to perform as a batter. Direct hit needed. Dusted dab on the onside. Both the batsmen brace away for one. Direct hit, and it would have been an interesting call to make for the umpire. Should be a wide. Yes, it is. Miles outside of. तो बात करें वैभव परमार की, तो मध्यम गति के गेंदबाज हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है बहुत से गेंदबाजों के लिए। कुछ गेंदबाज होते हैं
क्योंकि T20 का फॉर्मेट है, आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी बल्लेबाज आपको पढ़ पाए, आपको रीड कर पाए, प्रेडिक्ट कर पाए। उस प्रयास में कई बार गेंदबाज अच्छी गेंद करने के बाद भी एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में खराब गेंद कर बैठता है। लेकिन वैभव ये उन गेंदबाजों में से नहीं। ये लगातार अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ पर गेंद फेंकते हुए, हालांकि इस ओवर में अब तक 2 एक्स्ट्रा जरूर फेंक चुके हैं। हल्की से मिसफील्ड हुई थी वहां पर कवर के खिलाड़ी द्वारा, और एक रन चुराने का मौका बल्लेबाज को मिल गया। बढ़िया क्रिकेट फ्रांस द्वारा। गेंद ऑलमोस्ट 5वें 6ठे स्टंप पे थी और इंतजार किया, आखिरी समय में बल्ले का मुंह खोला, स्टीयर कर थर्डमैन के क्षेत्र में। बहुत ही बढ़िया शॉट, खराब गेंद, और पुल कर दिया एक बार फिर लॉन्ग और बाउंड्री की तरफ। यहां मिड विकेट के क्षेत्र मैक्सिमम, सागर के बल्ले से दूसरा मैक्सिमम का हुआ। हेलो हेलो। और अब स्कोर हो चुका है ब्लैक नाइट्स का 98, 98 रन। और कई बार जब इस प्रकार की काउंटर अटैकिंग होती है, दबाव बन जाता है गेंदबाज पर, दबाव बन जाता है ओपोनेंट्स पर। और काउंटर अटैकिंग की क्या ही बात करें, मॉडर्न इस एरा में अगर हम बात करें तो बेसबॉल का नाम सभी ने सुना है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और उनके कोच मैकलम का ये जो कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन, दोनों ही खिलाड़ी सेम माइंडसेट के, और उन दोनों ने जो अप्रोच लाया है इस क्रिकेट में, उनका मानना है कि आप बल्लेबाजी करते समय किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में हो, अटैक करते रहिए। लेकिन एक कारण है कि इंग्लैंड की टीम ने इस अप्रोच को अपनाया है, क्योंकि उनके बल्लेबाजी में गहराई है। 9 से 10 नंबर तक उनके पास बल्लेबाज हैं जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, और ये एक लिबर्टी मिल जाती है किसी भी टीम के लिए कि आप अपना शॉट्स खेलते रहें बिना किसी डर के। और अब गेंदबाजी के लिए आया है हरमीत सिंह, अपना दूसरा ओवर फेंकते हुए। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है कप्तान को जब आपके पास 3 से 4 स्पिनर आपके बॉलिंग लाइनअप में हो। एक लिबर्टी मिल जाती है आपको गेंदबाजी में रोटेशन करने के लिए। और ये सारे गेंदबाज जो हैं रेजिंग बुल्स के स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा एक प्रतीत बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई इनमें से पार्ट टाइम स्पिनर हो। सारे रेगुलर स्पिनर्स। सीधे पैड पे जाकर टकराई, अक्रॉस द लाइन खेला था। नॉट आउट का इशारा अंपायर द्वारा। गेंदबाज को यकीन भी नहीं हो रहा है
सवाल कर रहे हैं अंपायर से। टाइमिंग ठीक तो नहीं थी, खिलाड़ी गेंद के नीचे भी नहीं। कैच हो जाना चाहिए। काफी समय तक गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन गेंद के नीचे सही समय पर आ नहीं पाए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, और ये एक जीवन दान मिलता हुआ फ्रांस को। बढ़िया शॉट सागर द्वारा। डीप में खिलाड़ी को अच्छी फील्डिंग करने की जरूरत थी, चैतन्य ने वही किया। अपने दाएं तरफ भागते हुए गेंद को रोका और रोका बल्लेबाज को 1 रन पे। 15 ओवर का खेल पूरा, स्कोर हो चुका है 104 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं चैतन्य। अपने 2 ओवर में मात्र 4 रन खर्च करके 1 विकेट, एक सफलता प्राप्त की है, और वो अब चाहेंगे कि जल्द से जल्द ब्लैक नाइट्स की पारी को समेटे। उसी गेंदबाजी की अपेक्षा में आए हैं गेंदबाजी करना, और क्या दुर्भाग्यवश आउट हुए हैं बल्लेबाज सागर। इस गेंद पे कुछ कर ही नहीं सकते थे, बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं थी बल्लेबाज की, लेकिन भाग्य का साथ बिल्कुल भी नहीं मिला उन्हें। गेंद बिल्कुल भी उठी ही नहीं सतह से, और बल्लेबाज निराश। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे सागर। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए दो बहुत ही बढ़िया मैक्सिमम लगाया था, लेकिन पवेलियन जाना होगा वापस। और अब आए हैं बल्लेबाजी करने हरप्रीत ब्राइट, जो कि कप्तान भी हैं ब्लैक नाइट्स के। साथ देने आए हैं फ्रांस का, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे अभी भी मौजूद। बैकफुट पंच, pass the bowler and straight to the man at long off. That's a wicket. Off the back foot, was looking to steer to the third man. Not a good shot selection. And a good wicket keeping there. Good grab by him. Wasn't an easy catch. And the wicket for Chaitanya. Third one for him. And it's all out for Black Knights. After being asked to bat first, they have posted 105 on the board. The Raging Bulls, they need only 106 to chase this down. We will be back with the chase in shortly.
All right then, to chase down 106. The two openers are out in the middle for Raging Bulls. Ready to face the left-hander Sagar. And straight away, on the money, straight up, swinging into the right-hander, striking on the pad, probably going down the leg. Sandesh and Dharmendra are the openers for Raging Bulls, and as usual, Sagar has started the proceedings. Full toss delivery in the air, and he has dropped it. When you are chasing down such total, sometimes the batsman comes out to bat with a mindset of attacking, because a little cameo can play a huge impact in this chase. And I believe Sandesh, he must have got some message from the dugout. A cameo from any fielder, any batsman. 15 ball 30 or even 15 ball 25 will play a huge impact in this chase. And that's a wicket. That's a wicket. Yes, it is. Dharmendra was looking to take the ball as Sagar on straight away, was facing his first delivery. Playing it across the line and caught right in front of the stump. Dharmendra, who played a brilliant hand in the previous contest, but today he has gone for the golden duck, and the kind of start Black Knights needed. Sagar once again striking in his very first over. He has done this so many times for his team. Excellent bowling effort this from Sagar. Sending one left-hander to the dugout. Another comes in. It is Ritesh this time. Sometimes after getting a wicket, bowler gets a bit carried away. And the same happens with Sagar this time after getting a wicket in an effort to generate extra pace. He misses his radar, he misses his line going down the leg. And no chance for the wicketkeeper to stop it. And this outfield, as we have already mentioned, is lightning quick. The left-hander, he is so good with the new ball. Once again, getting a wicket in the very first over. The ability of swinging the ball both ways makes him a lethal. And he needs to be consistent with his line and length. Excellent delivery, play and a miss. Was looking to drive it through the cover with a minimal footwork from the batsman. Lucky for him that it didn't come outside of the edge of the bat. Black Knights
Everything going well for them at the moment, but this time, though the batsman wasn't in the control of that shot, outer edge of the bat, nobody in the deep. Third man runs to his left, but the ball wins the race against him. A boundary for Ritesh and a boundary for Raging Bulls. Good delivery and well played by the batsman. And off over 1 and the score is 10-1. Though the score is not so huge, it's not so big, but still, one thing is for sure, Black Knights, they're not gonna make the things easier for the batsmen. Their bowlers, they have the capability of taking wickets at the regular intervals. France this time. Lovely seam movement. This time, jacks back into the right-hander. Probably the height of the delivery saves him. Franz Fernandes, who bowls with a great control. But this one in the slot of the batsman. And what a whip of the wrist over the bowler's head. Sandesh taking on France. Excellent shot. He didn't even complete the follow-through of the bat, but the bottom hand was so brilliant. A lovely shot from him. The first maximum for him. Good comeback by France. This time shorting his length a bit. Good delivery by France, keeping it away. It's a wide ball. A bit late call from the umpire, but well, the umpire believes it was outside the tram line and an extension of an arm. Single added to the tally. 17 on the board. We are still into the second over. Full toss delivery. Though it didn't come from the mid of the bat, the sound of the bat wasn't so good, but the power behind the shot will take the ball sailing over the roof for a maximum. Second one coming in this over. And Sandesh, he wants to finish off the things in a hurry. As we mentioned,
The targets like this, a small cameo will play a huge impact. What a delivery that was. What a comeback from the bowler France inside edge. That misses the stump. Very fortunate for the batsman. But we all are aware of the saying, fortune always favors the brave. Good delivery and equally well fielded by France in his own follow through. End of over 227 for 1. Mauka 365 to the Premier League. Black Knights taking on Raging Bulls in this contest where Black Knights batting first posted a total of 105. In reply, Raging Bulls, they are off to a flyer. 27 in no time after 2. Sagar will continue. Good delivery. Bowling in a good rhythm, Sagar, as he always does. He has been brilliant throughout the tournament with the knee ball. Always strikes for his team in his very first spell. Bottom end of the bat. A better fielding effort required by the fielder at point. Exactly. That's what Sandeep said. Rather than waiting for the ball to come, you should attack on the ball. Good delivery and equally well played. Firmly struck off the back foot. Good bit of work done by the fielder at cover. But a little fumble by him allows the batsman to cross over 1. Left hand, right hand combination out in the middle. And the bowler Sagar is so used to with this. Full toss delivery. Couldn't take the advantage of that full toss delivery. Driven but finds the fielder at cover for no run. Off the pad and it's racing away to the fence. No fielder at fine leg. Boundary in form of leg by. So the umpire has to change her decision. She revokes it.
After the confirmation of the batsman, it has came off the bat and not the pad, so boundary will go against the name of Ritesh. Another full toss, and once again he finds the fielder at cover. End of over 3, and the score is 33 for 1. तीन ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 33 रन है एक विकेट के नुकसान पर। अब 11 के रन रेट से बल्लेबाजी हो रही है। रिक्वायर्ड रेट अब मात्र 4.25 का। और अब गेंदबाजी में बदलाव देखने मिल रहा है, गेंदबाजी करने आए हैं नजर ऐसा आ रहा है कि गेंदबाजी के लिए आए हैं हरप्रीत ब्राइट। गेंद उनके हाथ में है, जी हाँ, तो हरप्रीत ब्राइट ही हैं, गेंदबाजी करने आए हैं। बहुत ही सफल गेंदबाज हैं ये। अब तक 62 मुकाबले खेले हैं और 81 विकेट झटके हैं, तो स्ट्राइक रेट इनकी गेंदबाजी की वो कमाल है। और क्या शॉट खेला है खिलाड़ी गेंद के नीचे, ये लीजिए, हम बात कर ही रहे थे इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटीज की। पहली गेंद पे बड़ा शॉट खेलने का प्रयास हरप्रीत ब्राइट के खिलाफ बल्लेबाज संदेश द्वारा। शॉट सिलेक्शन बढ़िया जरूर था, लेकिन उसको टाइम नहीं कर पाए। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई नहीं, और बढ़िया क्षेत्र रक्षण मैं कहूंगा डीप में। गेंद काफी देर तक हवा में जरूर थी, अंत समय तक गेंद पर नजरें बनाए रखा खिलाड़ी ने, और कैच लपक लिया गया फ्रांस द्वारा। दूसरे विकेट का पतन होते हुए, और हरप्रीत ब्राइट ने झटके हैं, उन्हें हाथ लगी एक बड़ी मछली। संदेश जो कि बहुत ही लय में बल्लेबाजी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले लौटते हुए पवेलियन वापस। और अब आप बल्लेबाजी करने आए हैं रेजिंग बुल्स के कप्तान राकेश पुत्रन। तो ये अच्छा मुकाबला होने वाला है, कैप्टन वर्सेस कैप्टन। बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया एक्शन इनके। अगर एक्शन की अगर हम बात करें तो हाई आर्म एक्शन है, रिलीजिंग पॉइंट ऑलमोस्ट हेड के ऊपर होती है, और गेंद टप्पा गिरने के बाद स्किड होती है, पैरों पे जाकर टकराई है गेंद, अपील हो रही है और उंगली आसमान की तरफ। बहुत पहले ही मन बना लिया था इस गेंद को स्कूप करने का। गेंद सीधे पैरों पे जाकर टकराई, और बल्लेबाज एक बार फिर विकेटों के सामने पाए गए। प्लम्ब शानदार वापसी कराते हुए यहां पर कप्तान हरप्रीत ब्राइट। मात्र 3 गेंदों में झटक लिए हैं 2 बल्लेबाज, 2 विकेट, और 2 ऐसे विकेट जो बहुत ही काबिलियत रखते हैं, दमखम रखते हैं, बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। राकेश पुत्रन और संदेश दोनों ही धुरंधर बल्लेबाज रेजिंग बुल्स के पवेलियन में वापस। और अब बल्लेबाजी करने आए हैं ऑलराउंडर स्मितेश पाटिल।
क्या ओवर घटा है, बहुत ही बढ़िया कप्तानी मूव मैं कहूंगा हरप्रीत ब्राइट द्वारा। जैसे ही देखा कि विकेट मदद कर रही है स्पिनर्स को, पहले इनिंग में भी वही हुआ जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, और अपने पहले ही ओवर में ये खराब गेंद, पटकी हुई ये गेंद थी, काफी समय था बल्लेबाज के पास बैकफुट पे जाके इसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और खेलते ही दौड़ लिया एक रन के लिए। What a delivery! Harpreet Bright. He is all over the Raging Bulls batsman at the moment. The third wicket in this over, and this time the left-hander departs. This one pitched on the middle. It was a Tussle, which is turning away for the left-hander. And it's a timber. 34 for 4 out of nowhere. Raging Bulls, they are in trouble. Once again, is that man in the picture, Harpreet Bright, leading his team from the front. The spin bowling is at its very best. Now the body language of Black Knights. They are so optimistic at the moment. Just when one thought that this is gonna be a one-sided affair, Harpreet Bright had other ideas. Another appeal, another loud shout of LBW. But this one probably going down the leg. Denies the umpire, and of an exceptional over. A successful over. 3 wicket. Conceding only a single. 4 overs gone. 34 for 4. Another spinner into the attack. Half tracker delivery. Batsman goes aerial. Couple of bounces to the fielder at long off.
Good delivery. It was so close to the stumps and too close for the batsman to cut it away. Well bowled, nicely bowled. Fuller leg delivery and a good solid forward defense by the batsman. Almost an action replay of the previous delivery, but this time bowler has given a bit of air. A good back foot punch through the cover to get a single. Raging Bulls batsmen, they must be knowing that the required rate is pretty much under the control. All they need a partnership from here on. Driven through the cover. Good fielding. Running to his right, stopping the ball, and batsman not going for a run. End of a tight over by Shubham, conceding only 2. End of over 5. 36 for 4. और कई बार हमने देखा है कि स्पोर्ट्स में किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उसका एटीट्यूड जो है वो बहुत बड़ी रोल अदा करती है। जब 105 रन बनाए थे ब्लैक नाइट्स, तो कई खिलाड़ियों का मनोबल अपने आप गिर जाता है। जानते हैं कि बहुत ज्यादा रन नहीं हमारे पास डिफेंड करने के लिए, और जब विपक्षी टीम शुरुआत भी इस प्रकार की करे, महज 3 ओवर में बना दिए थे 33 रन, तो कंधे झुक जाते हैं बहुत सारे खिलाड़ियों का। लेकिन हरप्रीत ब्राइट, इनकी बात कुछ और है। नेवर से डाई, इस एटीट्यूड से ये खेलते हैं। अंदर की तरफ ये गेंद आती हुई, एक बार फिर कट करने का प्रयास। अपील बहुत तेज, बहुत जोरदार अपील थी ये, लेकिन अंपायर बिल्कुल भी टस से ना मस कन्विंस बिल्कुल भी नहीं हुए। बढ़िया गेंदबाजी, और गेंदबाजी की जब भी बात होती है तो एक गेंदबाज को जब गेंदबाजी करने आता है, अक्रॉस द लाइन, डाउन द लेग, तो हम गेंदबाजी की परसेप्शन की बात कर रहे थे, गेंदबाज के पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे। तो गेंदबाज या तो अपने फील्ड के अनुसार गेंदबाजी करता है, या तो मैदान के डायमेंशंस के अनुसार गेंदबाजी करता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, बॉल टू योर फील्ड और बॉल टू द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। और यहां पर ब्राइट अपने फील्ड के अनुसार और डायमेंशन के अनुसार दोनों ही गेंदबाजी करते हुए
स्क्वायर रीजन में एक छोटी बाउंड्री जरूर है और वो जानते हैं कि उसे बल्लेबाज टारगेट करना पसंद करते। क्या शॉट लगाया है स्मितेश पाटिल ने, अपना बायां पैर आगे की तरफ लेके आए और बॉटम हैंड का बेहतरीन उपयोग। आजकल के क्रिकेटरों के बॉटम हैंड में काफी दम और उस शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, हेड पोजीशन बेहतरीन और बैट का फ्लो कंप्लीट होता हुआ शानदार शॉट स्मितेश पाटिल द्वारा। एक क्वालिटी शॉट थी ये। बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया बल्लेबाजी और ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते आप। थोड़ा सा कैजुअल हो चुके थे वहां पर खिलाड़ी और बल्लेबाज तत्पर फुर्तीले अभी भी 1 रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास स्मितेश। 6 ओवर का खेल पूरा, स्कोर हो चुका है 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर और अब रेजिंग बुल्स को चाहिए 62 रन 84 गेंदों में। और जब आप इस प्रकार के टोटल्स को डिफेंड कर रहे हो तो जिस प्रकार बल्लेबाज साझेदारी करता है, पार्टनरशिप में बल्लेबाजी करता है, उसी प्रकार गेंदबाजों को भी पार्टनरशिप में गेंदबाजी करनी होगी। हरप्रीत ने विकेट झटके जरूर है लेकिन उन्हें दूसरे छोर से भी जरूरत है, अलग और गेंदबाजों को विकेट प्राप्त करने होंगे। हाफ ट्रैकर की ये गेंद थी। इस प्रकार की गेंद आपको विकेट, आपको रन बचा सकते हैं लेकिन विकेट आपको नहीं मिलेंगे और खासकर कि जब आपके पास मात्र 61 रन हो 14 ओवर में डिफेंड करने के लिए। खराब गेंद और बेहतरीन शॉट, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग इस बार वैभव द्वारा। हाफ ट्रैकर ये गेंद काफी बाहर, रूम मिला था बल्लेबाज को बैकफुट पे जाकर इसे पंच कर दिया है। डीप कवर के खिलाड़ी को कोई मौका नहीं, सभी खिलाड़ी गेंद को देखते रह गए और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और कई बार गेंदबाज अपने ही गेंदबाज से सीखता है, यहां पर शुभम को सीखने की जरूरत है हरप्रीत ब्राइट की गेंदबाजी से। किस लेंथ पर उन्होंने, किस लाइन पर उन्होंने गेंदबाजी की थी। ये बेहतर लाइन, बेहतर लेंथ भी और उतना ही बढ़िया बल्लेबाजी भी। अच्छी गेंद थी, इंतजार किया आखिरी समय तक, थोड़ा लेट खेले और स्पिनर के खिलाफ जब भी बल्लेबाजी के लिए सीख दिया जाता है कोच द्वारा तो ये पहली चीज उनके जहन में डाली जाती है, जितना लेट खेल सके आप उतना बेहतर है। लेकिन जब आप लेट करते खेलते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस लेंथ के गेंद को लेट खेल रहे हैं। कई बार फ्रंट फुट की गेंद को भी लेट खेलने के प्रयास में बल्लेबाज अपना विकेट गंवाए हैं। पचास रन पूरे हो चुके हैं रेजिंग बुल्स के। फुल टॉस की ये गेंद, एक समय को ऐसा जरूर लगा कि लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी बिजनेस में जरूर होंगे लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। ऐसी गेंद पर नहीं चुकने वाले बल्लेबाज, दोनों ही बल्लेबाज भले कुछ समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, लेकिन जितनी भी गेंदें इन दोनों ही बल्लेबाजों ने खेली है मिडल हुई है इनके बल्ले से। और जब मिडल हो रहा हो बल्ले से तो बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर होता है, वो सिर्फ इंतजार करता है खराब गेंद की।
और वही कर रहे हैं ये दोनों ही बल्लेबाज, अच्छी गेंद को डिफेंड कर रहे हैं और खराब गेंद, इक्के दुक्के भी आ रहे हैं तो उस इक्के दुक्के खराब गेंद को सीमा रेखा के बाहर फेंक रहे हैं। बहुत ही समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए वह हरप्रीत ब्राइट एक बार फिर चले मीडिया एंड से और एक उम्मीद से कि फिर से वो दोहरा पाएंगे जो उन्होंने अपने पहले ओवर में किया था। गुच्छों में विकेट हासिल करने की जरूरत यहां पर ब्लैक नाइट्स को। हल्की सी लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद जाती हुई और वाइड का इशारा अंपायर निनाद द्वारा। बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, इंतजार किया एक बार फिर बल्लेबाज ने, कट किया अंत समय में ऑफ साइड के क्षेत्र में, आसानी से एक रन दौड़कर छोर बदल लिया है। एक और मिसफील्ड और गेंद तेजी से सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, वहां पर डीप कवर के खिलाड़ी गेंद के पीछे। बढ़िया एफर्ट उनके द्वारा, 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। स्मितेश पाटिल 180 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए, एक बढ़िया मुकाबला उनके लिए। ये लीजिए फुल टॉस की ये गेंद, देखना होगा अंपायर का क्या निर्णय होता है। दोनों ही हाथ आसमान की तरफ मैक्सिमम। एक और फ्लाइटेड डिलीवरी जरूर थी लेकिन इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, कन्वर्ट किया था इस गेंद को फुल टॉस में, और संपर्क गेंद और बल्ले का बहुत ही बेहतरीन। क्या मुकाबला, क्या मैच है ये स्मितेश पाटिल के लिए। गेंदबाजी में भी कमाल किया था उन्होंने, अपने 2 ओवर में 15 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए थे, और जब बल्लेबाजी का अवसर मिला तो उस अवसर को दोनों हाथों से ग्रैब करते हुए स्मितेश पाटिल 11 गेंद 24 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। क्या लेंथ में परिवर्तन की थी, हल्की सी तेज फेंकी थी ये गेंद, और बल्लेबाज इसे स्वीप करने का प्रयास, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, चूके पूरी तरह से, और गेंद सीधे विकेट्स पे जाकर टकराई। एक बढ़िया पारी का अंत होता हुआ, जिस कैमियो की हम बात कर रहे थे। 24 रन महज 13 गेंदों में, एक शानदार पारी, शानदार बल्लेबाज के द्वारा। स्मितेश पाटिल पवेलियन वापस, और अब रेजिंग बुल्स को चाहिए 40 रन 73 गेंदों में, 73 बॉल्स 40 रन रिक्वायर्ड। और अब बल्लेबाजी करने आए हैं विशाल। चार विकेट झटक लिए हैं हरप्रीत ब्राइट ने। ये हो सकता है 5वां विकेट हो सकता है, जी नहीं, अंपायर ने नकारा। एक और शानदार ओवर का समाप्ति, 66 रन, 66 रन फॉर 5 आफ्टर 8 ओवर्स।
66 for 5. And change in a bowling attack. The left-hander is into the bowling attack. It's Ilesh Dodia. Weber is at the strike. Alongside him, Vishal, who is new at the crease. "40 required of 72. Various Black Knights, they need 5 good balls. It was a good length bowled by the left-hander, but the line was outside the tram line, and wide is the signal from the umpire. This time spraying down the leg. What a shot! Stand and deliver. Such a pleasing on the eye. Going inside out over the short cover. No fielder in the deep to stop that. Vaibhav Pawar just holding the shape. Whenever a new bowler starts conceding an extra straight away in his bowling, one thing I think of the reason could be the warm-up. Warm-up for any bowler is very important. And we have often seen the interval between the innings is the time where you can stretch your arms, stretch your body, you can free your arms and bowl some deliveries for the practice. Not every bowler does that, especially the bowlers who comes out and bowls in the middle overs. This is the one reason that they take their time before finding their line and length. And at the moment, Ilesh, he is not helping his team, bowling too many extras, and you don't have that much of target to defend. Now the equation is only 33 required of 70 balls. And this is good to see from Sagar, having some words with the bowler. You need some senior to come and talk to you when you're not doing well, or when the things are not going well for you. Those few words, they really make the wonders for be it a batsman or a bowler sometimes. And straight away, Ilesh bowling in a good channel. This one, once again, spraying it down the leg. Batsman lets it go and the wicketkeeper does the rest. Ilesh Dodia, he has a good bowling arm action. The length is also good. The line is the one thing where he has to work on. Much better line, much better length. Just within the tram line of the off stump, and the batsman lets it go once again. Vaibhav Parmar looks like a good batsman, technically sound batsman.
Good stance, good head position. The elbow, which is at the mid off. And what a shot, full toss delivery. Once again, didn't try to hit it with power, just a sheer timing. And this is a quick outfield. Does the rest. You get the value for your shot on this outfield. And Vaibhav Parmar is batting beautifully at the moment on 16. Let's it go. This is turning out to be a big over. And Raging Bulls, they needed one. Now the required rate is well below 3 in an over. Lovely delivery. Dot ball to finish off the over. 9 overs gone, 79 for 5, 27 of 66. It should be a walk in the park for Raging Bulls from here on. But still, nothing can be said. Harpreet Bright bowling his last over of his bowling spell. Black Knights, they need something miraculous. Black Knights need some magic. And the ball is in hand of the magician, Bright. Struck on the pad, struck on the pad. It's an appeal. They are still appealing, pleading to an umpire here. And the umpire, he is adamant with his decision of not out, and it will stay not out. Lovely delivery. Vishal, who is new at the crease, has faced only 3 balls, playing against a quality bowler. On both the occasion, he has been lucky. Flighted delivery, was looking to pull it away on the onside. Struck on the pad once again. Struggling to time the ball, struggling to feel the bat on the ball at the moment, Vishal. Bright, 3 balls remaining of his spell. He's 1 wicket away from the fifer. Another pull missed by the batsman. 4 dot balls on the trot. That's a wicket. Vishal has to go back to the hut. It's handling the ball. And as per the rule, after ball being struck on the pad, if you return the ball to the bowler without anybody's permission,
You can be given out if the appeal is made. And at this context of the game, Black Knights, they need a wicket. No matter how it comes, they need a wicket. So Vishal has been given out, handling the ball. 79 for 6, 2 balls remaining of Harpreet Bright's over. New batsman in is Harmeet Singh. Good delivery and good solid forward defense from the batsman. Last ball of his spell. Will he finish off with the fifer here? A loopy delivery. Batsman waits for it, and cuts it to the offside to get a single and get off the mark. Harmeet. 10 overs gone. 80 for 6. An end of brilliant spell from Harpreet Bright. 4 overs, 20 for 4.
26 required of 60 balls. And good thing for Raging Bulls. Hello. Vaibhav Parmar, he is still at the crease, looking solid as ever. And he will be the key here. So in this match, the captain is Sagar from Black Knights. And this is good captaincy. Bringing himself into the attack, going for the kill. 4 wickets is all Black Knights need. 4 good deliveries. He needs to produce one of the best spell he has ever bowled. Lovely delivery, lovely carry to the wicket keeper. But as soon as he sees behind him at the umpire, he is not happy. The extension of an arm there. Single added to the tally. 25 of 60 now. Good delivery. Bang on the money. Attacking the stumps. That's what you need to do. And various as per the batsman perspective, he just needs to block the good deliveries out. Lovely delivery. He is looking in a great rhythm right from his first over, right from the ball one, in fact. Sagar, who has been exceptional throughout this tournament, has always provided breakthrough for his team with a new ball. But this time, they need him to provide a wicket. But the watchman from, beg your pardon, Harmeet Singh in Raging Bulls. Hello. Hello. Hello, check. Just opens the face of the bat and nobody there. It passed the fielder at point and the outfield does the rest. Excellent batting, Harmeet Singh. Another all-rounder in the Raging Bulls lineup. This team bats very deep. Well bowled and well played. Good cricket all around. And just when you don't have a lot to defend, batting gets easier sometimes. You don't tend to play the rash shots, the bad shots. It was a pacey delivery. And it's not a boundary. It's a no ball from the umpire. No +1. Excellent effort in the deep by the fielder, Ilesh. Certainly stopped 3 crucial runs for his team. But it's a free hit delivery coming up.
Can he take the full toll of this free hit? Well, he didn't want to play the big shot. Just waits for it, steers it to the third man. Often we have seen whenever a batsman get a license to play the big shot on the free hit, they end up playing a wild slog, swing their bat hard. But it's not the case with the batsman Harmeet, playing it sensibly. Lovely delivery. And because there is no pressure on the batsman to score runs, he has just blocked it. Played it defensively back to the bowler for no run. And a 4-11, 89 for 6, 17 of 54 now. Seventeen of 54, and Akash Kawa is the bowler. Starts off bowling a half volley delivery, on driven by the batsman Harmeet, and strolling to the other end to take one. Poor delivery. A shorter length delivery on the hips of the batsman. Enough time for him to go deep in the crease and pull it on the onside. Fine leg fielder was inside the circle. He will go and fetch the ball. A boundary. He's just two maximum away from a victory. The Raging Bulls. 12 needed of 52. As we mentioned, it's important for any bowler to bowl to your field. And as per the field, bowler is supposed to bowl around the off stump. But this one on the hips of the batsman, and bowler got punished with 4 runs. What a placement! Excellent! Effortless but effective from Weber. Waits for it and it steers it. It passed the backward point fielder and third man. He was so fine. No chance for him to cut it away. 2 boundaries away from a victory here. Raging Bulls, 8 of 51. Was looking to play a big shot. Was looking to play a glory shot. He wanted to finish the match in this very over. Akash Kawa having the last laugh. He is pumped up. Knocks him over. 3 wickets. 3 good balls. Need to be bowled by Black Knights, and
With this wicket, one can say, if do we have a twist in a tail here? Well, this beautiful game of sports, which is cricket, it doesn't refuse to go without a drama. You gotta love this game. And you gotta love the attitude of Black Knights as well. Defending a tiny total of 106. They still have this match pretty much on. Left-hander Janish walks in. And Akash straight away goes around the sticks to him. Lovely delivery. Played with a soft and direct hit needed at the non-striker's end. Excellent fielding effort. He had only one stump to aim. It would have been a wicket. Batsman would have been a goner there. Nevertheless, batsman is home safely. 7 of 45 now. Beg your pardon, 49 it is. Clipping it on the onside. Fielder at square leg, who is standing just behind the strikers and umpire. Batsman straight away denies a single. 12 overs gone. 99 for 7. 48 ball. 8 overs, 7 runs. Now we can't be telling you the equation of run and ball. Rather, we should be telling you that Black Knights, they need only 3 wickets. So is it gonna be a 7 runs or is it gonna be a 3 wickets? Are we up for something special here? And the extras like this won't help. And the Raging Bulls, they are not complaining. Wide down the leg and wicket keeper couldn't gather it cleanly. 2 runs added to the tally, and it's 100 up for Raging Bulls. 101. Let's go. Let's it go. He is waiting for that slot delivery. He is waiting for his delivery, which will be bowled in his zone. He's having fun out there, Harmeet Singh. And this is good to see. Batsman good leg delivery and a solid back foot defense. Straight to the point for no run. 5 required. And batsman Harmeet, he is not looking in a hurry at all. Full toss delivery, driven. Excellent fielding effort by fielder at short cover.
Diving to his left and saving some runs. One boundary away. Raging Bulls. Will Janish? Will he play the winning shot? He goes for it. But the timing wasn't good. Have to settle only for one. Fielded by the fielder at long off. And Harmeet, he is strolling back to the other end. 3 required. 3 runs. And Black Knights, they need 3 wickets. Shorter length of delivery. Hitting the deck hard at the moment. Bowler Shehbaz. And the batsman is happy blocking it. Lovely delivery. This time in the gap. Fine leg fielder running to his left and limiting the run opportunity only to 1. Single taken off the last ball. 104 it is. 2 runs required for Raging Bulls. But one has to stand and admire the attitude of which Black Knights has played this game. They have given tough fight to Raging Bulls. Fuller length delivery. Played it late, played it very late. To the right of fielder at third man, who is inside the circle. The single taken and the scores are level. Outside edge. Straight to the fielder at point. He looked to grab it with the one hand, but couldn't. Will definitely go down as a drop catch, but a good effort by him. Is in the air, should be taken. It is not. It's Shahbaz who was at the mid-on. He had all the time in the world to get underneath it. It was a catch practice, but he has dropped a seater. Two back-to-back life given to the left-hander Janish, one at point, the other one at mid-on. Blocks it away. No run taken. Both the batters are just playing it out, and one has to keep in mind that net run rate will play a key role here. And that's a winning runs coming from the bat of Janish. It's a boundary. And it's a victory for Raging Bulls. But excellent bowling effort from the Black Knights.
They really gave Raging Bulls a tough fight, but eventually Black Knights would be thinking they fell short of some good runs. So while batting first, all right then, man of the moment, Smitesh Patil from Raging Bulls, excellent with the bat and with the ball as well. A true all-round performance from a true all-rounder. First of all, I would like to give this coupon to you, 20% discount from the Chimichurri. And how does it feel when everything goes well for you, be it every department, and ending up a victory? It feels very good when you are on winning side. Yeah, it was good performance from the team. You played like a little cameo, as we mentioned, a little cameo like this tricky chase, a tiny total plays a huge impact. Was there any message sent to you to play a quick game or play the strokes right from the ball one? No, it just happened like that. So ball, I got the ball. That's it. I played on the merit of the ball. That's it. All right, then playing the merit of the ball is the key for the batsman Smitesh Patil. Congratulations once again for being the player of the match. Please go well. That's all the post-match presentation. We will be right back with the live coverage of the next match
which is about to begin soon. Thank you.
तो आज के दिन का दूसरा मुकाबला शुरू हो चुका है सैटर्न वॉरियर्स और थंडरबोल्ट्स के बीच, जहां पर वॉरियर्स के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का उनका फैसला अंकित जौहरी और अमित गौरव। इनकी सलामी जोड़ी क्रीज पर मौजूद, रनआउट का मौका नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन गेंद को फील्ड नहीं कर पाए सही समय में। सैटर्न वॉरियर्स की क्या ही बात करें, बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट रहा है अब तक इनके टीम के लिए। अब तक एक भी मुकाबला ये हारे नहीं है। इस पूरे टूर्नामेंट में 4 मुकाबले खेले हैं, चारों मुकाबले में जीत हासिल हुई है। इस गेंद को पुश करके ऑफ साइड में तेजी से दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। एक रन के साथ अंकित ने अपना खाता खोला। स्ट्राइक दिया है अमित गुरव को। गेंदबाजी का भार संभाला है शुभम उपाध्याय ने थंडरबोल्ट्स की तरफ से। एक युवा खिलाड़ी, प्रतिभाशाली खिलाड़ी, बढ़िया गेंदबाज हैं ये। बढ़िया गेंद, पैरों पे जाकर टकराई गेंद। रन लेना चाहते नहीं थे अमित, लेकिन फोर्स किया अंकित ने उन्हें। गेंद की तरफ ध्यान भी नहीं था उनका, उनको पता भी नहीं था गेंद उनके पैरों पे लगने के बाद किस दिशा में गई। जब तक गेंद को फील्ड करके लौटाया जाता, एक रन लेने का मौका। फुलर लेंथ की ये गेंद और बढ़िया तरीके से इसे ड्राइव कर दिया है। एक रन से संतुष्ट, एक अच्छे ओवर की समाप्ति, बढ़िया ओवर की समाप्ति शुभम द्वारा। एक ओवर के बाद स्कोर है 3 रन बिना किसी नुकसान के। Right on the money, straight away. Bala, an all-rounder from Thunderbolts, having a new ball in his hand. Good delivery. This was deeping into the right-hander. He was looking to play it on the onside, inside edge of the bat. Goes into the vacant region on the onside. Square leg fielder is not there. 3 fielders can be seen on the onside. One at short mid wicket, long on, and a mid wicket, deep mid wicket. 3 fielders protecting the onside. The rest all fielders are on the offside. One sleep in position. Excellent batting, opening the face of the bat, and the fielder had extra cover. He was in business, running to his left. Was looking to stop the ball with his foot, but fails it. Goes into the fence boundary. The first one for Satan Warriors coming from the blade of Amit Gurav, opening his account in some fashion. And for any cricket player in his initial days, when he goes to a club, the first thing coach tells him about the fielding
no matter what, you need to feel the ball with your hand and not with your foot. Irrespective of you field it or not, it doesn't matter. But the basic should be done right. This is what the instructions given to the fielders by the coaches. But here, the fielder from extra cover, he didn't even bend. He just tried to stop the ball with his football skills. Failed miserably. Gave away the 4 runs for Saturn Warriors. Good delivery. Right from the middle of the bat. And it's easy for anyone to spot if the batsman is in good rhythm, is in good nick or not. As soon as he starts middling the ball, as soon as his footwork is spot on, one can sense that the batsman is having a good time in the middle. And Amit Gurav is looking like one. It was a full toss delivery, but once again, the ability of Bala is such that he has that knack of bowling those in deeper to the right hander. This one again, deeping in slowly to the right hander. He was way early on his shot, misses it completely. This time, missing his radar by some margin, going down the leg, and the batsman was looking to help it on its way to the fine leg. No fielder at the fine leg. And when you don't have a protection for such balls, it's a crime to bowl such length, such line. Another wide, another extra would be added to the tally. 11 on the board. Play and a miss. But again, outside the tram line. The movement of the seam is getting some good swing on offer. Bowler Bala. It's 4 in a row. So I would like to tell something about the swing bowling. One has to learn this art of swing bowling from the great James. James Anderson was one of them. Is one of them. In fact, he's still playing for England and very effective. The legend of this game. When the ball is swinging too much, you need to use your popping crease to a great effect. Sometimes when the bowler comes, hello. Sometimes when a bowler bowls closer to the wicket, the pitching of the delivery is tend to be on the middle or off stump. But because Bala is bowling almost at the wide crease of the popping crease, his pitching was around the fifth stump, and since he is shaping away the ball from the right hander, it's going outside the tram line. The very next ball, it came closer to the wicket, and the result was different. 2 overs gone, 14 for none.
Shubham will continue and it's a wrong line to bowl Amit. He was waiting for it. It was on his hip and he is just helping it on its way to the fine leg. No fielder there to stop it. Easy runs is for Warriors. He bowled a brilliant first over. Shubham Upadhyay conceding only 2 in that over. Misfield at point. Should have been stopped easily. Ball sneaks through his leg and in no time into the fence. Back-to-back boundaries for Amit Gurav. Over delivery once again, a half tracker bowled by bowler. Goes deep in the crease once again, backing away and punching it off the back foot to the cover. Only to get a single. So both the batsmen, they have played a risk-free cricket so far. Just waiting for the bad top or the odd deliveries. Lovely delivery. That's the one length where the bowler Shubham has to be consistent at. And the way that ball carried to the keeper, it must have given some confidence to him. But this one down the leg. We're still waiting for the umpire's confirmation. It has come off the pad of the batsman. Wicket-keeper France was there. He tried his best but couldn't stop the ball, couldn't gather the ball cleanly. And since no fielder is there at the fine leg, ball will stop only after crossing the fence. Turning out to be a big over, expensive over so far. Though the 4 runs of the pad will not go against the bowler's name, but it will definitely would be added to the tally of certain Warriors. Excellent delivery. So time and again, he's bowling some good deliveries. Some play and a miss as well from the batsman. But if you keep bowling those boundary balls, boundary deliveries, the pressure gets off the batsman. 3 overs gone. Score is 27 for none. Bala will continue from Shivaji Chhatrapati, Shivaji Maharaj end. Good batting, sensible from Amit. It was a good delivery, attacking the stumps and just covering the line of the ball.
Head position was right, playing with a soft hand, and fielder was almost at the 30-yard circle. Goes up pitch this time, and he has found the gap. This time to the left of long off. Excellent placement and brilliant timing this time from Ankit Johari. The first boundary coming from his blade. Saturn Warriors, the only team so far in this contest, in this tournament, who has scored more than 200 twice. Batting first, and they love to bat first. They have a brilliant bowling lineup, brilliant bowling attack. Shuffles across this time. Full toss delivery. Batsman doesn't get hold of it completely. Miscues it. But luckily falls into the no man's land. Was looking to flick it away on the onside. Being struck on the pad. Still practicing that flick. Good use of wrist this time from the batsman Ankit. Once again, waiting for it, letting the ball come closer to him, closer to his body, and closing the face of the bat on the onside. Fielder in the deep there, deep square leg. Enough time for the batsman to cross over for one. Down the leg, another extra. This time a good bit of wicket keeping from France. Quickly moving to his left and stopping the ball. Good delivery into the block hole. Direct hit needed at the non-strikers end, and once again the fielder had shot mid wicket. Rather than going at the ball, he was waiting for the ball to come to him. And the batsman, they scamper for one. 4 overs completed, 37 without loss. Tussle Premier League Season 2. Brought to you by Mauka 365. Thanks to our sponsors, TMS Holidays, and the energy drink provider, Energol. Thanks to all the 8 teams for participating and making this event a mega event. And 2 teams are up against each other. Thunderbolts up against the table topper Saturn Warriors.
What a shot! The quick hand of the batsman. He slashes it very hard. Goes flat over the extra cover. As if he was waiting for it in an anticipation. Such an eye-catching stroke that was from Ankit. And good comeback by bowler Pritham. The strong lad loves to use his shoulder. Likes to hit the deck hard. And the very next delivery after bowling a full toss, shortening his length a bit. Another full toss, a friendly full toss. And as soon as the batsman plays at it, he looked at the umpire. Nothing from them. Good delivery. The kind of action the bowler has, bringing the ball into the right hander, comes naturally to him. So the bowling around fourth or fifth stump would be an ideal length for him to bowl to the right hander here. Exactly what he did the previous delivery. He has nicked it. And the ball races away to the fence. And once it looked like that it didn't carry to the keeper, France, he tried his best, moving, in fact, driving to his right. But the ball was deep into him. Couldn't gather it, and the ball passed the fielder at third man as well. A boundary of the last ball of the fifth over. So 5 overs completed and the score is 48 for none. पांच ओवर का खेल पूरा 48 रन बिना किसी नुकसान पर। एक बार फिर अंकित और अमित की जोड़ी, सलामी जोड़ी, अपना काम करते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए ओपनर बतौर ओपनर बल्लेबाज की बहुत ही बढ़िया रन रेट से बल्लेबाजी हुई है और एक मौका जरूर मिला था, एक जीवन दान जरूर मिला है अंकित को पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर, जहां पर बाहरी किनारा लगा था और फ्रांस थे वहां पर विकेट कीपर। बढ़िया प्रयास जरूर किया था लेकिन अंत समय में गेंद उनके ग्लव्स से फिसलती हुई। और अगर उस आउटसाइड एज को छोड़ दें तो अब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रिस्क फ्री क्रिकेट खेला है, ज्यादा शॉट खेला नहीं गया है हवा में और जो भी शॉट्स खेले हैं डाउन द ग्राउंड ही खेले हैं। तरुण रामचंदानी आए हैं गेंदबाज, राइट आर्म अराउंड द स्टिक्स, गेंदबाजी करेंगे ऊंचे काठी के गेंदबाज जो कि
बाउंस बढ़िया प्राप्त करते हैं ये। और पहली गेंद बहुत ही बढ़िया टप्पे पर ये पड़ी गेंद, और उसको बहुत बढ़िया तरीके से खेला भी बल्लेबाज ने सीधे कवर के क्षेत्र में, और खेलते ही कॉल दे दिया था 1 रन का। लेग स्टंप पर पिच होती हुई ये गेंद टर्न बिल्कुल भी नहीं लिया, लेकिन सीधे पैरों पे जाके टकराई बल्लेबाज के, और कोई भी खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड करने के लिए मौजूद नहीं। 1 रन लेकर 50 रन पूरे कर लिए हैं। 50 रन की साझेदारी हो चुकी है दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के बीच। बैकफुट पे जाके इसे खेला है, हवा में जरूर थी गेंद, लेकिन कुछ ही क्षण पहले अरुण के सामने ही 1 बाउंस उनके हाथों में। जगह बनाई, इस बार हल्की सी जगह बनाई और इनसाइड आउट खेला है। क्या शॉट लगाया है अंकित ने, ओवर एक्स्ट्रा कवर और अंपायर का इशारा। 4 रन, कुछ ही इंच अंदर गिरी थी ये गेंद बाउंड्री कुशन के पहले। और आजकल के बल्लेबाज, मॉडर्न एरा के बल्लेबाज बहुत ही पसंद करते हैं इस शॉट को खेलना, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से जाती हुई ये गेंद। एक बार फिर जगह बनाया था, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज तरुण द्वारा। लेंथ को हल्की सी शॉट की, फ्लैटर ट्रेजेक्टरी की ये गेंद, और ज्यादा उछाल नहीं थी इस गेंद पे, उछाल से मात खाते हुए बल्लेबाज। कदमों का इस्तेमाल, बॉटम एंड ऑफ द बैट, और खिलाड़ी का कॉर्नर पे मौजूद। गेंद सीधे उसके हाथ में। 1 रन लेके अपने पास रखेंगे स्ट्राइक अंकित, और 6 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। स्कोर है 56 रन बिना किसी नुकसान के। So after 6, it's 56 for none. And once again, Saturn Warriors. These two batters have given them a solid start, setting the platform for the batters to come. They have a strong middle order, Saturn Warriors. Improvisation this time. The length was short and the batsman comes across. Since no fielder was there at the fine leg, he scoops it over the wicket keeper. Couple of bounces into the fence. Now slowly and surely, Ankit Johri, he is getting into his groove. Right delivery. The floated delivery tempted the batsman to come forward, was looking to play through the cover once again. No timing whatsoever. Shimmies down the track. Mistimes it, but it didn't carry to the keeper. Beg your pardon, the fielder at long on. Arun Upadhyay was there, running to his right, fielding it, returning the ball to the bowler. Enough time for the batsman to rotate the strike. Quicker one. Opening the face of the bat. Shorter boundary on the square. This is an excellent batting effort, excellent batting skills from Ankit Johri. So he has decided, one of the batsmen has decided, it's time to step on the gas.
And at the moment, Ankit Johri is batting beautifully on 23 of 27. This time a bit slower delivery. Was looking to go past the wicket keeper. No connection at all. Another flatter delivery. Keeping it a bit low this time. But the batsman watching the ball closely, playing lately off the back foot, taking a single, retaining a strike. 67 for none after 7 overs. I reckon it's a shaker from Saturn Warriors sprinting in, giving some advice, probably a message being sent to both their batters. One can sense something big is coming. Another improvisation, and this time he fails to connect it. Ankit Johri has to go back to the pavilion after playing a brilliant hand. 34 of just 29 balls. Played some beautiful strokes. 5 boundary and 1 maximum under his belt. So the partnership has been broken. Breakthrough provided by the bowler Tarun. 67 for 1 after 7.1. New batsman in is Devansh Singh. And straight away he middles it. Plays it back to the bowler for no run. Good delivery that was from Tarun. Experienced campaigner, experienced bowler. Lovely shot. Driven firmly by the right-hander Devansh. Good bit of fielding done by Bala at long off, limiting the run only to 1. Once again, bowling at a brilliant line, Tarun. This time on the legs. Flick of the wrist, couple of bounce into the square region. The square leg fielder was inside the circle. And bowling on the pads of the set batsman is asking for a trouble at the moment. Then that too to the batsman likes of Amit, who is striking at the 160. Thunderbolts bowler, they have done a decent job so far, bowled some good dot balls, but every now and then conceding boundary balls not helping them. Once again, the leg side is delivery on the pads of the batsman. Easily tucked away on the onside to take 1. 8 overs completed. It's 73 for 1.
Saturn Warriors. We did talk about this wicket. The spinners, they have got some real purchase from these wickets, that's for sure. But even though being a spinner, if your line, if your length is not good, you will be punished. Consistency is what demanded by the bowler. Brilliantly well played by the batsman Amit, but because the pace wasn't much on that delivery, opening the face of the bat, and the fielder from third man sprinting to his left, stopping the ball, and the batsman for one. Half-tacker delivery, and a misfield at the point, the backward point. This will not please the bowler. At once it looked like it will go straight to the fielder at backward point, but eventually probably some bad bounce has made the things difficult for the fielder there. A loopy delivery. They once wanted to slice it over the backward point, outer edge of the bat. Once again, the fielder at point was in the business, running forward. Ball falling just short of him. Should be a wide, yes it is. Sometimes the overthinking from a bowler can also go against him. This is much better line, much better length. And as a spinner, it's always best for you to bowl to your strength. Even the best of the spinners, be it Mutaya Muralidharan, Shane Warne, or the greats of India, Anil Kumble, Harbhajan Singh, and the modern era favorite R. Ashwin, they all advise to any spinner who is still playing or who wants to play, you need to bowl to your strength. Bowling your stock deliveries will get you a wicket. Even though you have a variation, you can bowl too many deliveries in an over. You may bowl flipper, you may bowl the cutter, the googly, the dusra, whatever you say. But every spinner has a stock deliveries, and you have to be consistent. You have to trust your instinct. So 9 overs completed. It's 80 for 1. Probably the last over before the drinks break. And it's the bowler Somil Patel. Somil Patel, he has been so impressive throughout this tournament. Doesn't bowl with a long run up, but his line and length, he has been spot on. Back foot cut, square cut Rajan. Good fielding by the fielder at deep cover. But the throw was a bit wideish. Wicket keeper couldn't gather it. And the batsman gets an extra run in form of overthrow. Another good delivery and driven down the ground in the hands of the fielder at long off.
Good looking shot. It's racing away to the fence. Fielder at deep cover, sprinting to his right this time. Tries to save the ball but couldn't. Boundary to Amit Guru. Leaning forward. And a good full face of the bat through the cover. Excellent shot from Amit. This time off the back foot. Bowler shortening his length a bit and the batsman standing behind the line of the ball. Rock solid. This time keeping a tad low. Dot ball to finish off the over. 7 came in that over. 10 overs completed. 87 for 1. And it's time for a refreshment break. Thanks to our partner, sponsor, Energol. Mauka 365, Tussle Premier League, Season 2. We are live from NL Sports Ground from Daisar East. This is the match number 2 here. It's a scorching heat and it takes a toll on the fielders, on the players to play such a weather. It takes a taste of your fitness. And as बंद क्यों अब एंड हेलो हेलो एंड चेंज हो चुका है, गेंदबाजी का छोर बदल चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज एंड से गेंदबाजी करने चले बाला। अब तक 2 ओवर में 21 रन खर्च किए हैं। कुछ एक्स्ट्रा जरूर फेंकी गई है डाउन द लेग बाला द्वारा, लेकिन अब वो चाहेंगे कि कुछ किफायती ओवर की गेंदबाजी की जाए।
बढ़िया गेंद, हाफ वॉली की गेंद जरूर थी, लेकिन कभी कभी इस प्रकार की गेंद को सीमा रेखा के बाहर फेंकना उतना आसान नहीं। गेंद सीधे गई शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। बढ़िया गेंद, एक बार फिर बाला द्वारा, इस बार थोड़ी सी और फुलर लेंथ की डिलीवरी, बल्लेबाज थोड़ा लेट खेलते हुए, फ्रंट फुट बहुत ज्यादा आगे नहीं गया था और यही एक कारण था कि गेंद शॉर्ट कवर के बाएं की तरफ गई। एक रन लेने का आसान सा मौका, चहलकदमी करके अक्रॉस द लाइन आए थे, इस गेंद को रोकना चाहिए था। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी अगर देखें तो बाउंड्री से कुछ 10 गज पहले ही खड़े थे, वहां पर तैनात थे। गेंद काफी तेजी से ट्रेवल हो रही थी उनकी तरफ और एक बार फिर सही समय पर झुक नहीं पाए और गेंद उनके पैरों के बीच से निकलती हुई 4 रन के लिए। और ये रहा विकेट। बढ़िया गेंद बाला द्वारा, इस गेंद में गति भी थी और घुमाव भी। टप्पा गिरने के बाद, सीम पर गिरने के बाद अंदर की तरफ आई, तेजी से फ्लिक करने का प्रयास था अमित द्वारा, उस फ्लिक करने के लिए चूक गए और गेंद सीधे पैरों पे टकराने के बाद किल्लियों से टकराती हुई एक अच्छी पारी का अंत होता हुआ। अब इस विकेट के बाद अब दोनों ही सलामी बल्लेबाज सटन वॉरियर्स के पवेलियन वापस। अमित ने बनाए 34 रन 24 गेंदों में और अब बल्लेबाजी करने आए हैं प्रशांत। शॉर्टर लेंथ की ये गेंद एक बार फिर इसे मात्र पॉइंट के क्षेत्र में डैप करके खेल दिया था। 1 रन के लिए, 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए प्रशांत कल के खेले गए मुकाबले में यहाँ मैन ऑफ द मैच रहे थे। ये प्रशांत बहुत ज्यादा रन चेस नहीं करना था, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को जीत दिलाई थी। क्या गेंद है ये, बाहरी किनारा लगा है या नहीं? बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील। क्या गेंद थी ये प्रीतम द्वारा, टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, स्क्वायर कर दिया था बल्लेबाज को। भाग्यशाली रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। अनप्लेबल डिलीवरी थी और इस गेंद के बाद गेंदबाज का मनोबल काफी बड़ा होगा।
अंदर की तरफ आती हुई ये गेंद, इसे जगह बना के बैकफुट पे खेल दिया है, मिसफील्ड हुई है खिलाड़ी द्वारा और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों ही युवा खिलाड़ी, दोनों ही फ्रेश लेग्स, और दबाव डाला था वहां पर खिलाड़ी के ऊपर डीप में, और अंपायर का निर्णय 1 रन शॉट। यहां प्रतीत होता है कि देवांश थे जो कि स्ट्राइकर्स एंड पे भाग रहे थे, लेकिन क्योंकि नए रूल के मुताबिक आपका बल्ले का हिस्सा उस लाइन के कुछ आगे होना चाहिए था। बहुत ही बड़ी विकेट हो सकती थी ये। करारा प्रहार करने की कोशिश जरूर की थी प्रशांत ने। जितनी तेजी से गेंद उनकी तरफ आया उससे भी तेज उनका बल्ला चला था, लेकिन संपर्क गेंद और बल्ले का बिल्कुल भी नहीं। बढ़िया मुकाबला चल रहा है अब तक गेंद और बल्ले का। चूहे और बिल्ली की खेल अब तक नजर आती हुई। बेहतरीन शॉट, कैच होनी चाहिए, ये कैच हो जाएगी। पिछले 2-3 गेंदों से प्रयास कर रहे थे प्रशांत, दबाव डालना चाहते थे गेंदबाज प्रीतम के ऊपर, लेकिन प्रीतम अपने स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी करते हुए, बेहतरीन टप्पे पर गेंदबाजी करते हुए बल्ले के बाहरी किनारा और कवर के खिलाड़ी के हाथ में बिल्कुल भी नहीं चुके। और ये बढ़िया कैच, एक अच्छा विकेट, बढ़िया विकेट प्राप्त होता हुआ थंडरबोल्ट्स को। प्रशांत जो कि कल के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, हीरो ऑफ द मैच रहे थे, आज कुछ खास नहीं कर पाए बल्ले से। मात्र 3 रन पर लौटते हुए पवेलियन वापस। अब बल्लेबाजी करने आए हैं मंजूनाथ, उनके सामने हैं प्रीतम शेट्टी। एक शेर तो दूसरा बब्बर शेर, और पहली गेंद में इसे कट कर दिया है पॉइंट के क्षेत्र में। एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी वहां पर डीप में तैनात, अपने बाएं तरफ दौड़कर गेंद को रोका। बारहवां ओवर गतिमान, स्कोर है 97 रन, 3 विकेट के नुकसान पर काफी लंबे रन के साथ गेंदबाजी करते हैं ये। हाई आर्म इनका एक्शन, ओपन आर्म एक्शन, और बढ़िया गेंद। विकेट लेने के बाद मनोबल चरम सीमा पे है इनका। और अच्छी बात यह रही प्रीतम शेट्टी की आज की, ज्यादा गति के प्रयास में गेंदबाजी नहीं की, अच्छे लाइन, अच्छे लेंथ पर और कंसिस्टेंसी दिखाई अपनी गेंदबाजी में। 12 ओवर का खेल पूरा, 97 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, 97 for 3 after 12 overs। गेंद हवा में और गेंद गिरी, गेंदबाज और मिडॉन के बीच। एक बार फिर देवांश को भाग्य का साथ मिलता हुआ।
आखिरी समय पर अपने शॉट को चेक किया था। भाग्यशाली रहे कि गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र के खिलाड़ी के तक कैरी नहीं हुई। व्हाट अ शॉट मंजुनाथ, बिल्कुल भी समय जाया नहीं करते हैं ये। मात्र दूसरा गेंद का सामना कर रहे थे अपनी पारी में, और क्या शॉट लगाया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के ऊपर से। बहुत ही बड़ा शॉट, मैक्सिमम। और इसी 6 रन के साथ सेटन वॉरियर्स के 100 रन पूरे। बैकफुट पे जाके इसे कट किया था। बढ़िया बल्लेबाजी। और अगर फील्ड की जमावट की बात की जाए, यहाँ पर दूसरे रन के लिए भाग चुके, रन आउट का मौका हो सकता है नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर। थ्रो थोड़ी सी तेज और सटीक होनी चाहिए थी। बढ़िया रनिंग देवांश द्वारा, डेंजर एंड पे भाग रहे थे और एकदम चीते की रफ्तार अपनाई थी उन्होंने। फुल टॉस की अगेन, शॉर्ट आर्म जैब, वन बाउंस इनटू द फेंस। इस प्रकार की गेंद का इंतजार करते हैं वो मंजुनाथ। तो ऐसे बल्लेबाज हैं कि ये अच्छे गेंद को भी बाउंड्री रेखा को पार कर सकते हैं। ये तो वो डिमांड कर रही थी। बहुत ही खराब गेंद, फुल टॉस की गेंद।
14th over in progress, and the score is 112 for 3. Shubham Upadhyay is into the attack. Full toss delivery. Missed by the batsman. Was an opportunity for him to hit it away anywhere he wanted to. Was looking to drive it through the cover, only to connect with the thin air. There has to be a wide or not. Will be confirmed by the umpire. Yes, it is. Extension of arm from her. Even the wicket keeper couldn't gather it. This one didn't carry at all. Lack of bounce there. Single taken. 2 runs added to the tally. And the strike is with Manjunath, who is once again batting at the strike rate of 233 at the moment. On the back foot, powerfully struck back to the bowler. In his own follow through, Shubham Upadhyay did well to get a hand. And it's good to see batsman checking on the bowler. Good spirit of cricket shown by the Manjunath there. In all the matches he has played so far, Manjunath, he has got a good start. Very few occasions he has gone cheaply. Lovely delivery. In his second spell, Shubham Upadhyay is looking a different bowler. In this over so far, he has hardly gave away anything to the batsman. But this is a half-tracker delivery, and it demanded to be put away. Batsman obliged, and he finds the gap between cover and a mid-off. So all the efforts in this over from Shubham to contain to the batsman, to bowl the dodgeball, to put the pressure on the batsman, goes in when after bowling a boundary ball. And he goes downtown. Has it gone all the way? Yes, it has. It goes over the leaping fielder at long on. He was in the business till the very end, and he couldn't time his jump to the perfection. Some athleticism needed by him. Nevertheless, 6 runs added to the tally of Saturn Warriors, and it's 124 for 3 after 14. Good shot by Devansh, but not enough power behind that shot.
He'll only get a single. Well, talking about Manjunath, he is batting at the strike rate of 240 at the moment, 24 of just 10 balls. And in the entire tournament so far, he is at the second in the list of the batsmen with the best strike rate. His overall strike rate so far in this tournament has been 232. He's just behind the Uzair, who is from the Stallions, with a strike rate of 242. So every time he has come out to bat, he has done some damage, more than a damage in fact. Look at that shot, how effortlessly he has put away on the onside. A tall, strong lad, a shot out of delivery. It will not bother him at all. It sits up nicely to him. Was in a good position, comfortable height for him to put it away on the onside. Excellent batting once again from the man in form. This is the only length to bowl to the batsman likes of Manjunath if you want to contain or doesn't want to leak runs. Was looking to cut away. Devansh Singh, he has looked a bit shaky in this inning. Tried so many things. Tried to play, do some improvisations, shuffling across, making rooms. But nothing has worked out for him so far in this inning. Once again playing on the up. Wasn't in a good position. The balance wasn't good. The timing wasn't good. But he will be happy with the single. He will have the strike with him. 15 overs completed. 131 for 3. Last 5 overs to go. And Warriors are at 131 for 3. And once again, they are eyeing at the target of more than 200 here. And Saturn Warriors, they come with a great reputation. They have already scored more than 200 twice in this tournament. At the moment, it's 131 for 3 after 15. New bowler is into the attack. The vice captain of this team, Arun Upadhyay. And it starts off bowling down the leg. It was a pacey delivery. Wicket keeper wasn't ready for it. Even if it was way wide of him. Another extra down the leg. As we mentioned before as well,
Whenever a fresh bowler comes to bowl, we have often seen they come out to bowl without a warm up. A warm up for any bowler is very crucial. Inside edge of the bat. Ball is going at the shorter boundary at the square leg region. The timing wasn't so good. Ball stops within the boundary. Fielder from deep mid wicket running to his right, fielding it, returning the ball to the keeper. Batsman taking easy couple of runs. Has he connected it well? Sawmill is there. He did everything right, got underneath it. He was well settled to catch it. Tried to catch it in a reverse cup style. It went long in the air. And the ball was swirling. Life given to the danger man. Manjunath. Another opportunity. Another drop. This wasn't a difficult one. Once again, Sawmill. He did well to get underneath it. But there is something disturbing him. Maybe the previous catch that he has dropped, it must be going on in his mind. And it happens even with the best of the fielders. If you drop one catch and if you get another one right off the next delivery, that drop catch goes in your mind. Probably that could be the reason. Otherwise, Sawmill Patel, he is a good fielder. It's just a bad day for him in the field, and he would like to get this off his mind as soon as he can. This time he has connected it so well over the bowler's hand and no stopping that. This guy, he can punish you, and especially after getting a couple of life. Now he is rubbing the salt into wounds. Poor delivery. And a misfield at fine leg as well. Nothing is going well for Thunderbolts at the moment. And it's not good. It's not good to see Thunderbolts. They are a good team, and they have their shoulder down at the moment. 16 overs completed. 145 on the board for 3. 145. Spinner has been brought back into the attack. It's Tarun Ramchandani. Good delivery.
But the ball is racing away to the fence. Even the good deliveries are going into the fence. This time the batsman wasn't in complete control to play that pull. But the power of this batsman is such that even the missed times are going into the boundary cushion. And with that boundary, it's a 50-run partnership between these two batters, Devansh and Manjunath, 53 of just 27 balls. Good delivery. But not a good fielding in the deep. So at the moment, Thunderbolts, they are leaking too many runs. He has bowled well, Tarun Ramachandani, even though the numbers against him are not justifying how well he has bowled in this inning. Some inside edge of the bat, some misfield, or else the numbers would have been different. So it's not easy to take him on. And the batsmen have struggled to time the ball against him. Once again, a good length delivery, but the line was a bit wideish, slightly outside the time line. Enough for the umpire to spot on. Good delivery in the air. Bala at long off. Ball falling just short of him. He's a brilliant fielder in the deep. Bala doesn't drop many, and this time ball falling just short of him. Full toss delivery into the gap. Fielder from long on. He ran to his right, but couldn't stop the ball within the boundary. One loose delivery in this over from Tarun Ramchandani. Probably was looking to bowl a slower in the air. Was looking to tempt batsman with some floated delivery. Ended up bowling a full toss, a juicy full toss, where batsman capitalizing on it, scoring a boundary of it. He's one run away from his half century. Manjunath 49 of just 21 balls. And he will remain on 49. After the end of over 17, it's 160 for 3. Arun Upadhyay will continue, bowls a juicy full toss on the pads of the batsman. Devansh just a tickle on the onside. Single taken.
Given the strike back to the danger man. He's on 49 of 22. Extension of an arm. Misfield in the deep. It's Bala this time. Ball goes left to him, and that's a half century for Manjunath. 53 of just 23 balls. With the help of 8 boundaries and 2 out of the park. Once again rising on the occasion, the all-rounder from Saturn Warriors, the big man. As easy as you like, clean as a whistle, over the bowler's head. Fielders in the deep are mere a spectator. It's a bread and butter for him to play this kind of deliveries. Much better delivery. Quicker one, flatter one. And a bit low as well. Ball sneaks under the bat of Manjunath. Wicketkeeper does the rest. Slot delivery once again. And the long off in business. Bad bounce again to him. But he did well eventually to manage to gather a ball and restrict the batsman only for 1. A good looking drive only to get 1. Devan Singh at the moment playing an anchor role. But we are into the slog overs now, and both the batsmen would be thinking of somewhere more than 200 at the moment. 170 is the 73 is the score. 13 came in that over of Arun. And that's the sportsman spirit for you. The rivals on the field, what a good buddies off the field. Pritham Shetty and Manjunath. Tarun to bowl the last over of his spell. And Devansh favors the onside, goes on the long on, single taken. And now it's all on the big man. Came down the track. And very well done by the fielder Tarun. And if we talk about the bowler and the batsman, Manjunath, he has been brilliant against every bowler. The one bowler he couldn't take on is the Tarun. Mistimes it. But even the mistimes are going into the fence. Has it gone all the way? Umpire is still waiting. And finally, he's waving his right hand, signaling a boundary. Once again, Tarun is ready to bowl to Manjunath. Shuffles across. Inside edge of the bat, and once again, it's that shorter boundary at the square leg region, fine leg region. One has to feel for the bowler. This game is cruel for the bowler.
As I mentioned before, Tarun has bowled brilliantly throughout the inning, but bowling with no luck today. Has it come off the pad? No, it has not. $183 on the board. Still 8 legitimate deliveries to be bowled. Another wide. And it was a quicker one. Fuller leg delivery, and probably the wicket keeper, his view was got blocked by the batsman's attempt to play a sweep. 5 runs added to the tally. 188 to maximum away from a 200 run mark. Slower one in the air. They are looking for 2. 1 run taken. And they are strolling back for 2. Bad delivery. And this time, he has punished it into the vacant region there. Nobody to stop that. Nobody to feel that. He's having a great fun there. Manjunath toying with the bowlers at the moment. 74 of just 31 balls. 19 overs gone. 194 for 3. What a cricketer he is. Manjunath bowls with a new ball for his team. And an excellent hitter with a bat. A true asset in all forms for his team. So to bowl the last over of the inning, it's Arun choosing to bowl a right arm around to Devansh. Full toss delivery. Fielder has got some hands on it. Good fielding. The batsmen, they didn't even look to take the second run. Excellent delivery. And whatever was said by the umpire looked like that it was missing the leg stump. Good bowling this by Arun. So far, he has been able to get better of the batsman. Didn't bowl a boundary ball so far in this over. Only 2 runs have come. Make it 3 in an over. 3 singles of 4 balls. This is brilliant last over turning out to be for Thunderbolts. But the key here is he needs to finish off well. There it is. Down the leg. And the batsman letting it go. 198 on the board.
Excellent delivery into the block hole. 1 run taken. A misfield in the deep, and that will allow the batsman to take two. And with this couple of runs, it's 200 for the Saturn Warriors. Now, this is the third time they have scored more than 200 in an inning. Was looking to do some improvisation, looking to scoop it. A good last over bowled by Arun Upadhyay, conceding only 6 in that over. So after winning the toss, opting to bat first, Saturn Warriors, they have posted a big total of 200 for 3. We will be right back with the chase.
And maybe the batsman, he had already decided to play that paddle sweep. Wasn't in a line of that delivery at all. Losing his wicket, and Ramesh once again striking in his very first over. What a start this for Seton Warriors. New batsman walking in is Roshan. They are appealing, but not a confident appeal. Just a loud shout. Nothing from the umpire, a dot ball. In the air. One fielder in the deep on the onside. Is Dheeraj at deep mid wicket. The timing wasn't so good. Hitting the high on bat. And with the single, Roshan is off the mark. Left hand, right hand combination out in the middle. It's Ravi. The left-hander is ready to face Ramesh, who bowls lots of dusras. And googly with the back of a hand and with his action, it's not easy to pick those googlies. Full toss delivery just over the bowler's head. Checking his shot at the last moment. Batsman Ravi. And he's off the mark as well with a single. What an over this is so far. Excellent over, excellent first over by the wristy spinner. Ramesh conceding only 3, getting a wicket, setting the tone for his team in this inning. So the spinner from both the ends and brilliant shot from the left-hander. Flatter delivery. It came into the batsman, but he backs away and cuts it on the onside. The shorter boundary at the third man. No chance for him to stop. Once again, was looking to find the gap between third man and backward point, but this time place it straight in the hand of the backward point fielder, only for 1. It's lots of oohs, lots of ahs behind the stump. Roshan, he's struggling with his timing at the moment. Once again, hitting the high on the bat. Was looking to play on the up. Excellent delivery, and they are going for a run. Run out opportunity at the striker's end. Better throw required. This is a big total to chase down 201 against the quality bowling unit. And the spinners are from Seton Warriors. Is this a wicket? Some confusion out in the middle.
Please wait, please wait. So finally, a decision has been made. Batsman Roshan, he has been bowled out by Raj. At once it looked like the bails taken off by the wicket keeper, but eventually umpires they spotted it right. Ramesh will continue. But this one, a wrong line to bowl to the left-hander, drifting down the leg, and even the wicket keeper couldn't gather it. It wasn't that difficult to take, but nevertheless, 5 runs will be added to the tally of Thunderbolts. 15 on the board for loss of 2 wickets, end of over 2. Ravi and Kamlesh are the 2 batters out in the middle for Thunderbolts. The owners on their show. Hello. Right arm around the sticks to the left-hander, especially if you are a wristy spinner, wristy leg spinner. Not an ideal side to bowl to the left-hander, but that's what the bowler is confident of. Another extra. Too many extras already. No legitimate deliveries have been bowled so far in this over. And already 7 came. Was in the air, but safely. Hemang Nadkarni was there at long on. Good running between the wicket by both the batsmen. What a shot! Just a flick of the wrist and the ball goes over the rope for a maximum. A little bit of MSD there in that shot. Excellent use of bottom hand. Ravi. He's looking good. Another wide ball down the leg. This is turning out to be a big over. Ravi. He's taking the bowler Ramesh to the cleaners at the moment. And this is good line to bowl, and equally well played by the batsman as well. Once again, a leg side-ish delivery on the pads. Nothing from the umpire. That means it has come off the bat of the batsman. And that's a timber.
Googly didn't pick by the batsman at all. He was looking to play it through the cover. And it came in sharply to the right hander. Kamlesh, he has gone for a golden duck. What a delivery that was from Ramesh. Though he has gone for plenty of runs in this over. But ending up with a wicket under his belt, under his name. Somil Patel walking in a bit early than he would have expected. End of an eventful over where we got to see everything. A good flourishing shot from the left-hander and eventually getting a wicket under his name. Ramesh, 3 overs gone, 27 for 3. 17 coming in that over. Raj and Ramesh, the R factor at the moment, doing the tricks for Warriors. More than the bowler, wicket keeper, he is excited. He is sensing a wicket on every delivery. Once again, beautiful use of wrist. Ravi, he is a good batsman and he needs to bat till the very end for his team to take them home. His inning plays a key role here. All he need a bit of a support from the other end as well. Somil Patel is the new at the crease. He needs to be there. Play sensibly. Play the good balls out. Wait for the bad ball and punish them. Lovely delivery. Raj and Ramesh, both the spinners are bowling in tandem. And both have them got success so far. Ramesh has got couple of wickets under his name, where Raj has also a wicket under his belt. Both the spinners have lived up to the expectations of the captain and the spectators of Warriors. This one, Somil Patel was looking to play across the line. Luckily, this was going down the leg. What a delivery. Batsman was clueless about it. He didn't know what happened. 4 overs gone. 29 for 3 it is for Thunderbolts.
पांचवा ओवर गतिमान है और रमेश अपना तीसरा ओवर फेंकते हुए बाएं हाथ के बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज रवि को, और एक बार फिर रवि के बल्ले से ये बेहतरीन शॉट, बहुत ही एफर्टलेसली लगाते हैं ये मैक्सिमम, और बढ़िया बल्लेबाजी भी, लेंथ पिक करते हैं, हर गेंद को बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं करते, इंतजार करते हैं खराब गेंद का, इंतजार करते हैं उस गेंद का जो उनके स्लॉट में हो, जो उनके जोन में हो, और जब भी गेंद उनके आंख में पड़ी है गेंद को फेंका है सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी रवि द्वारा थंडरबोल्ट की तरफ से, और जैसे ही गेंद देखा बैकफुट पे जाकर इसे कट कर दिया है। देखना होगा गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है या नहीं, अंपायर की तरफ से कोई भी इशारा नहीं, तो यकीनन 2 रन जुड़ जाएंगे टीम के खाते में और बल्लेबाज रवि के खाते में। बाहरी किनारा और स्लीप के खिलाड़ी के बाएं तरफ से गेंद हवा में जरूर थी लेकिन बहुत ही कट किया था, और जब भी आप तेजी से बल्ला चलाते हैं बाहरी किनारा लगने के बाद गेंद और ज्यादा से ट्रेवल करने लगता है। थर्डमैन के खिलाड़ी जो कि ऑलमोस्ट बैकवर्ड पॉइंट थे तैनात, और कोई भी मौका नहीं गेंद को रोकने का। तो 1 रन ले लिया है लेफ्ट हैंडर रवि ने, स्ट्राइक दे दिया है सौमिल को। 4 गेंदों का सामना कर चुके हैं और अभी भी अपने पहले रन की तलाश में बल्लेबाजी करते हुए सौमिल पटेल। तेज गति की ये गेंद लेकिन विकेट पे गिरने के बाद रुक के आई बल्लेबाज सौमिल के लिए, और उसे रक्षात्मक तरीके से खेला बिना किसी रन लेने के इरादे से। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। Forty-four for 3 after 5. How did that miss that stump? Unbelievable stuff. Right arm off spinner, bowling right arm around the sticks to the left hander. A sleep in position, backward point, short cover, and a fielder at square leg. These 4 fielders are inside the circle, and rest of the fielders are protecting the boundary. Long on, long off. A mid wicket. A fielder can be steep at deep cover. This is brilliant batting from Ravi so far, playing like a lone warrior. The only batsman from the Thunderbolts who have been for the opponent so far. And all the strokes that he has played in this inning
It has come off the meat of the bat. Such a clean striker of the ball. छठा ओवर गतिमान 51 रन हो चुके हैं पूरे थंडरबोल्ट्स के। 3 विकेट के नुकसान पर सौमिल पटेल और रवि क्रीज पर मौजूद। अब पार्टनरशिप पनपती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 24 रन 17 गेंदों में। और अब तक जो भी ये मुकाबला हुआ है, ऐसा प्रतीत हुआ है कि ये मुकाबला वॉरियर्स और थंडरबोल्ट्स के नहीं, वॉरियर्स और रवि के बीच हो रहा हो। और ये खराब गेंद, एक खराब गेंद को सही नसीहत दिया है यहाँ पर बल्लेबाज सौमिल ने। गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए मात्र गेंद को दिशा दे दी है। फाइन लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन रोकने में नाकामयाब। इस 4 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए सौमिल स्कोर हो चुका है 55 रन। बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी गेंदबाज द्वारा। एक फ्लैटर डिलीवरी थी ये, लेकिन कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं गेंदबाज राज। अंदर की तरफ लाते हैं राइट हैंडर के लिए। 6 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। स्कोर है 55 रन 55। 3 विकेट के नुकसान पर रवि बल्लेबाजी कर रहे हैं 37 रन पर, महज 20 गेंदों का सामना करके। 185 स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। और जब भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी करता है, एक एलिगेंस उसके बल्लेबाजी में नजर आती है। वो एलिगेंस इस बल्लेबाज में। जो भी स्ट्रोक्स खेले हैं इन्होंने अब तक, उस स्ट्रोक्स को अगर आप हाईलाइट में भी देखें तो आप बल्लेबाजी का लुत्फ उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और अब गेंदबाजी करने आए हैं सेटन वॉरियर्स के सबसे सफल गेंदबाज इस टूर्नामेंट में अब तक, हेमंग नाडकर्णी। जब भी टीम को जरूरत पड़ी है ब्रेक थ्रू की, हर बार ये खड़े रहे हैं। और ये लीजिए, अब इसे कमेंटेटर्स कर्स कह लीजिए या कुछ और, लेकिन आप इस गेंदबाज को एक्शन से दूर रख ही नहीं सकते। विकेट टेकिंग गेंद जरूर नहीं थी ये। टप्पा गिरने के बाद गेंद रुक कर आई और एक अच्छे बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ दुर्भाग्यवश रवि को लौट कर जाना होगा पवेलियन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। और ऐसा प्रतीत भी नहीं हुआ कि कोई भी गेंदबाज उनको आउट करने में कामयाब भी होगा। कहीं न कहीं विकेट की मदद मिलती हुई गेंदबाज को ये। और एक आसान सा कैच कवर के खिलाड़ी के हाथ में। रवि, एक शानदार पारी का अंत होता हुआ 37 रन महज 21 गेंदों में। और अब बल्लेबाजी करने आए हैं एक हरफन मौला खिलाड़ी, ऑलराउंडर प्रीतम शेट्टी। बड़े बड़े शॉट्स, बड़े बड़े गगनचुंबी मैक्सिमम लगाने के लिए जाने जाते हैं प्रीतम शेट्टी। देखना होगा इनके खिलाफ किस प्रकार की गेंदबाजी होती है। और अपना है पहले ही गेंद में ड्राइव कर दिया है। बढ़िया थ्रो डीप से। नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर मात्र 1 रन से संतुष्ट। 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए
बहुत ही बढ़िया कट कर दिया है थर्ड मैन और पॉइंट के बीच से। मंजू वहां पर बैकवर्ड पॉइंट से गेंद को चेस किया था और गेंद को सही समय पर बाउंड्री के अंदर रोका गया। नहीं रोक पाए बल्लेबाज को 2 रन लेने से। हाफ ट्रैकर की ये गेंद कट कर दिया है। एक बार फिर रन आउट का मौका हो सकता है। अपील की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं अंपायर से। और रनआउट का मौका स्ट्राइकर्स एंड पर बहुत ही करीबी मामला हो सकता है और अंपायर ने कंसल्ट किया, समय लिया। सौमिल पटेल डेंजर एंड पे भाग रहे थे, स्ट्राइकर्स एंड पे बहुत ही बढ़िया थ्रो वहां पर खिलाड़ी द्वारा डीप से, बहुत ही सटीक थ्रो सीधे विकेट कीपर के हाथों में, वो बिल्कुल भी नहीं चुके और कुछ इंच रह चुके थे क्रीज पे आने से पहले ही। अब्दुल्ला समाद बल्लेबाजी करने आए हैं 7वें नंबर पर। प्रीतम शेट्टी उनके साथी जो कि अभी नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर है। जरूरत है अब थंडर बोल्ट्स को साझेदारी की, एक बड़े साझेदारी की। धीरे धीरे गेम, और ये लीजिए क्या विकेट है ये। हेमंग नाटकर्णी अंदर की तरफ गेंद लाए थे तेजी से, बहुत पहले ही बल्लेबाज कमिट हो चुके थे उस शॉट को खेलने के लिए। पैरों पे टकराई पहले और उसके बाद गिल्लियां बिखेरती हुए। छठे विकेट का पतन होता हुआ थंडरबोल्ट्स की पारी, डगमगाती हुई, लड़खड़ाती हुई ये पारी, डूबती हुई उनकी नैया, अब उस नैया को पार लगाने के लिए आए हैं अब नए बल्लेबाज।
7 ओवर 60 रन 6 विकेट। अब बल्लेबाजी का दारोमदार है प्रीतम शेट्टी और शुभम उपाध्याय पे। गेंदबाजी करने आए हैं नए चेहरे धीरज कुमार। अब 4 रन और जुट जाएंगे थंडरबोल्ट्स के खाते में। इस 4 रन के बाद स्कोर हो चुका है 64 रन। 64 for 6। 7.3 overs bowled, and Thunderbolts, they are in all sort of trouble at the moment. Now the owners on this big man. He has done this before. It's time to do the same. Has he got it from the bat? Yes, it is. It was down the leg on the pad for the batsman. Just a flick of the wrist. And the fielder at fine leg, he was inside the circle. Hello, hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. Unbelievable catch from the wicket keeper. One of the best we have seen in this tournament so far. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Check. Hello. Hello, hello, hello. Check. Hello.
69 for 7. Thunderbolts 8.1 overs. Hemang Nadkarni once again amongst the wicket. He is into the second over. Has gave away only 5 runs and got 3 wickets. और अब नए बल्लेबाज आए हैं अरुण उपाध्याय और पहले ही गेंद का सामना कर रहे थे। बहुत ही शानदार स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड खेला था। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी डीप में मौजूद जरूर, लेकिन कोई भी मौका नहीं उन्हें इस गेंद को रोकने का। अपने पिछले मुकाबले में भी थोड़े लेट आए थे बल्लेबाजी करने अरुण, और बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, टीम को अच्छे पोजीशन में लाए थे। और जहां से उस पारी की अंत हुई थी वहीं से शुरुआत करते हुए इस पारी की बहुत ही बढ़िया अटैकिंग बल्लेबाज है अरुण उपाध्याय, थंडरबोल्ट की तरफ से वाइस कैप्टन इस मुकाबले में। शानदार गेंदबाजी, एक ऐसा लेंथ जरूर था जहां पर बल्लेबाज को लुभाया था। एक समय ऐसा जरूर मन में प्रतीत हुआ बल्लेबाज के कि शॉट खेल सकते थे, लेकिन अंत समय पर गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है। कई दफा हमने देखा है कि गेंदबाज मात्र एक ही टप्पे पर गेंदबाजी करता है, एक ही लेंथ पर गेंदबाजी करता है और प्रेडिक्टेबल हो जाता है, बल्लेबाजी आसान हो जाती है उस गेंदबाज के खिलाफ करना। लेकिन हेमंग नाडकर्णी, इनकी बात कुछ और, गति में परिवर्तन करते हैं, लेंथ में परिवर्तन करते हैं, बल्लेबाज को सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और इस गेंद पर देखा गया कि अंत समय पर अपनी उंगलियां फेरी थी, कटर फेंकने की प्रयास किया गया था हेमंग द्वारा। टप्पा गिरने के बाद सीम पे से कट कर अंदर की तरफ भी आए, बल्ले का बाहरी किनारा लगा सीधे खिलाड़ी के हाथों में जो कि इनसाइड द सर्कल तैनात है। 9 ओवर का खेल पूरा, स्कोर है 76 रन, 76, 7 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं मंजू, जिनका बेहतरीन दिन रहा बल्ले से। बल्लेबाजी जब करने आए थे तो बल्ले से बनाए थे 77 रन महज 35 गेंदों में। और अब गेंदबाजी करने आए, आमतौर पर देखा गया है कि नए गेंद से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज विकेट्स की अगर हम बात करें तो स्पिनर्स को बहुत मदद मिला है और यही एक कारण था कि नई गेंद स्पिनर्स को सौंपी गई थी और स्पिनर्स ने, सभी स्पिनर्स ने कमाल किया है, विकेट्स चटकाए हैं।
और अगर हम मंजू की भी बात करें तो बड़े रनअप नहीं, छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। स्पिन कलाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बड़ा टर्न तो नहीं है इनके पास, लेकिन लाइन और लेंथ, सटीक एक्यूरेसी देखने मिल सकती है इनकी गेंदबाजी पे। डिसिप्लिन देखने मिल सकता है। और फील्ड की सजावट अगर हम देखें तो 1 2 3 4 खिलाड़ी बल्लेबाज के इर्द गिर्द। और प्ले एंड मिस, तीनों स्टंप्स एक्सपोज कर दिया था यहां पर बल्लेबाज शुभम ने। बहुत ही बढ़िया कप्तानी यहां पर सेटन वॉरियर्स के कप्तान द्वारा। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, गोइंग फॉर द किल, वही करते हुए 7 विकेट्स झटक चुके हैं विरोधी टीम के। और अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऑल आउट किया जाए, लेकिन इसी बीच बेहतरीन शॉट लगाया है शुभम ने। मिड ऑफ के क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी वहां पर नहीं था। टेस्ट मैच की फील्ड की सजावट की गई है सेटन वॉरियर्स द्वारा। मिड ऑफ में कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं था। एक आमंत्रण दिया था बल्लेबाज को कि आप उस रिस्क को उठाइए, खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेलिए। वही किया, उस आमंत्रण को स्वीकार किया बल्लेबाज शुभम ने। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला गया वो स्ट्रोक 4 रन के लिए। और प्रीतम अब कुछ पीस ऑफ एडवाइस देते हुए यहाँ पर बल्लेबाज शुभम को। और ये लीजिए, एक बार फिर तीनों स्टंप्स छोड़कर खेल रहे थे शुभम। और जब अटैकिंग फील्ड हो, किस प्रकार की बल्लेबाजी की जाती है, सीखने की जरूरत है बल्लेबाज को। और आप ज्यादा कुछ अपेक्षा कर भी नहीं सकते 9 नंबर बल्लेबाज से। बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया जरूर था इसके पिछले गेंद पर, लेकिन अगली ही गेंद हल्की सी तेज गति की गेंद अंदर की तरफ तेजी से कट कर आई। और क्योंकि बल्लेबाज ने तीनों स्टंप्स छोड़कर खेलने का प्रयास किया था, इसे दोहराना चाहते थे, कवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, गेंद और पैड के बीच बहुत मोटा गैप दिखा। उस गैप के बीच गेंद किलियों से जा टकरा गई। 8वें विकेट का पतन। स्कोर है 81 रन। 10वां ओवर गतिमान और अब समय हो चुका है ड्रिंक्स ब्रेक का। एनर्जॉल ड्रिंक्स ब्रेक बहुत ही जरूरी इस तपतपाती धूप में। Certain Warriors, they are just 2 wickets away from a thumping victory here. 2 good balls. So 10 overs gone. Score is 81 for 8.
बड़ा शॉट खेलने का प्रयास स्ट्रेट अवे। अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचा है थंडरबोल्ट्स के बल्लेबाजों के पास। अटैकिंग ही एक ऐसा ऑप्शन है इनके पास जो कि काउंटर अटैकिंग की जरूरत है। और फील्ड की सजावट जिस प्रकार की है, कोशिश तो यही होगा बल्लेबाज का कि गैप को ढूंढा जाए। बल्ला चलाते रहेंगे ये। अपील की जा रही है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर निनाद वो अपने निर्णय पर अटल, अनमूव्ड। और हेमंग नाटकर्णी अपने चौथे विकेट के तलाश में गेंदबाजी करते हुए। गेंद हवा में जरूर, लेकिन खिलाड़ी के सर के ऊपर से पॉइंट के क्षेत्र में खेला गया ये शॉट। जानबूझ के बल्ले का फेस ओपन किया था, जानबूझ के हवा में खेला गया ये शॉट। छोटी बाउंड्री है ये ऑफ साइड में। और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए अरुण के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका। और परिस्थिति कुछ भी हो, अरुण को खेलना होगा अपनी पारी, जिस पारी के लिए वो जाने जाते हैं, जिस बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए प्रसिद्ध। धीमी गति की ये गेंद एक बार फिर उंगलियां फेरी थी। गेंद के ऊपर वो गति नहीं दी थी बल्लेबाज को जिस गति की अपेक्षा में बल्लेबाजी हो रही थी। जैसे एक कहावत है कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो तो पाने के लिए बहुत कुछ होता है। तो अब इस पारी में पाने के लिए बहुत कुछ है अभी भी थंडरबोल्ट्स के पास। बढ़िया गेंद बालचंद्र के लिए, और उसने बढ़िया तरीके से खेला भी। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहां पर तैनात, 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 11 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, स्कोर है 87 रन, 87 फॉर 8। Manju bowling from the media and bowling an off spinner to the right hander, giving lots of fare. Look at that field placement. Fuller length delivery on the pad, flicks away, but straight in the hand of the fielder at fine leg. Good forward defense from Bala. Right from the meat of the bat, straight to the fielder at cover. Stump out opportunity. An umpire has his finger up in a flash. Excellent wicket keeping once again by Ankit Johri behind the stumps. Manjunath, he is everywhere. Be it batting or be it bowling,
be it medium pace or be it spin bowling. He can do everything on the field. Last man, Thunderbolts walking in. It's the big man, Tarun Ramachandani. Full toss delivery on the pads. Couldn't time it. No bat involved. Stuck on the pad. Bowling with the hope of bundling the team out. Excellent placement. Good stride forward. Full face of the bat. Not enough power behind that shot to take the ball over the ropes, but enough to take a one. 12 overs completed. 88 for 9 it is. Thunderbolts, they are still behind 113 of their target. Whereas Certain Warriors, all they need is a good one ball. राज हैं गेंदबाज, गेंदबाजी करने आए हैं बल्लेबाज तरुण को। और फील्ड की सजावट करें तो देखें तो अगर एक भी खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात नहीं, मात्र एक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी धीरज देखे जा सकते हैं बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते हुए। बाकी सभी खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी बल्लेबाज के इर्द गिर्द, कुछ खिलाड़ी ऑलमोस्ट 25 यार्ड के दायरे में। तेज गति की गेंद पैरों पे जाके टकराई। शॉट अटेम्प्ट भी नहीं किया था, डेलिबरेट था और अपील की गई थी, लेकिन जानते भी थे कि ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई चली जाएगी। बेहतरीन शॉट तरुण के बल्ले से। कुछ डॉट गेंद जरूर फेंकी गई थी इस ओवर में। इस गेंद पे मौका मिला बल्लेबाज को हाथ खोलने का और दे मारा ऑन साइड में एक टप्पा और सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। क्या गेंद फेंकी थी ये, ललचाया था बल्लेबाज को उस फ्लाइटेड डिलीवरी के साथ। फॉरवर्ड जरूर आए थे, इसे धीमे हाथे चेक किया था अपना शॉट। भाग्यशाली रहे कि गेंदबाज तक कैरी नहीं हुई। एक बार फिर काफी धीमी गति की ये गेंद और ट्रैप लाइन के काफी बाहर। वाइड का इशारा। एक और धीमी गति की ये गेंद। हेलो, काफी समय बल्लेबाज के पास बैकफुट पे जाके इस शॉट को खेलने का। गैप में ढकेला इस गेंद को।
और 1 रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 11 ओवर, माफ कीजिए 13 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। स्कोर है 95 रन 9 विकेट के नुकसान पर। सचिन छुरी हैं गेंदबाज। अपना पहला ओवर, व्यक्तिगत पहला ओवर फेंकते हुए पहले गेंद में 4 रन बटोरे थे बल्लेबाज ने। और अगली गेंद सुरक्षित रक्षात्मक तरीके से सॉलिड डिफेंस करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज तरुण। दिशाहीन गेंदबाजी, लेग स्टंप को छोड़ दी हुई ये गेंद और विकेट कीपर के दस्तानों में जाने दिया बल्लेबाज ने। 1 रन और जुड़ जाएंगे टीम के खाते में। 1 रन के साथ थंडरबोल्ट्स का स्कोर 100 रन। फुल टॉस, हेलो हेलो, फुल टॉस की ये गेंद सीधे पैरों पे जाकर टकराई थी, लेकिन यकीनन बल्लेबाज के जांघों पे जाकर लगी थी ये गेंद और यकीनन स्टंप्स को छोड़ती हुई चली जाती ये गेंद अगर हॉकाई का इस्तेमाल किया जाता तो। गेंद हवा में और धीरज ने कोशिश की जरूर, लेकिन थोड़ा लेट रिएक्ट किए। मौका बना जरूर था, लेकिन उस मौके को भुनाया नहीं यहां पर खिलाड़ी धीरज ने। बढ़िया थ्रो लेकिन उनके द्वारा नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं हिटिंग द बुल्स आई। बढ़िया गेंद, एक अनुभवी खिलाड़ी सचिन छुरी, एक और बढ़िया गेंदबाज। आज इनकी ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं वैसे सैटर्न वॉरियर्स को। जब भी टीम मुश्किल में होती है तब कप्तान भरोसा जताते हैं सचिन छुरी पर और उनके भरोसे पर हर बार खड़े उतरे हैं। फ्लाइटेड डिलीवरी जरूर थी, लेंथ भी बहुत बढ़िया था, लेकिन लाइन से चूके गेंदबाज। अभी भी आखिरी विकेट की तलाश में गेंदबाजी जारी सचिन छुरी द्वारा। स्वीप करने का प्रयास, ऑन साइड में बाल बाल बचे की गेंद की उछाल ने गेंद को पैरों पे जाने से बचाया। डॉट गेंद के साथ 14 ओवर का खेल पूरा, 101 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदों में अब जीत के लिए चाहिए 100 रन। और एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव करते हुए शेखर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। माफ कीजिए,
लेग आर्म्स स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर रमेश, रमी रमी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। बहुत ही बढ़िया मुकाबला इनके लिए ये घटा है अब तक। हालांकि एक ओवर इनका जरूर महंगा साबित हुआ था, जिस एक ओवर में थंडरबोल्ट्स की तरफ से रवि ने बटोरे थे 17 रन उस ओवर में। उस ओवर को अगर निकाल दें तो बहुत ही बढ़िया मुकाबला रहा है ये रमेश द्वारा। बहुत ही बढ़िया गेंद, और बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को रोका भी तरुण ने। लेकिन अब गेंद को मात्र ब्लॉक करने से काम नहीं चलेगा, बड़े शॉट्स की जरूरत है, क्योंकि अपील की जा रही है स्टंप आउट, और अंपायर ने नकारा उस डिसीजन को, नॉट आउट का इशारा। एक बार फिर विकेट के स्टंप्स के पीछे बहुत ही फुर्तीले, बहुत ही चौकन्ने विकेट कीपर अंकित जौहरी इस पारी में ऑलरेडी उन्होंने अपना विकेट कीपिंग का स्किल का प्रदर्शन किया है। उस कैच को आप कैसे भूल सकते हैं, वो दर्ज हो चुका है टसल प्रीमियर सीजन 2 में। हेलो, वन ऑफ द बेस्ट कैच हमने देखा है इस टूर्नामेंट में अब तक। वन हैंडेड ब्लाइंडर था वो विकेट कीपर अंकित द्वारा। और डॉट गेंद का सिलसिला जारी है। गेंद हवा में, मात्र चेक किया था और मिसजज कर दिया है उस कैच को हेमंग नाडकर्णी, जो कि ऑलमोस्ट 45 यार्ड पे खड़े थे। एक समय को उन्हें जरूर लगा कि गेंद सीधे उनके हाथों में आ रही है, लेकिन अंत समय पर गेंद डीप होती हुई उनके मात्र कुछ ही गज गेंद का टप्पा गिरते हुए एक मिस जजमेंट और जीवन दान मिलता हुआ तरुण को। एक समय को जान जरूर हलक में आ गई थी बल्लेबाज की, लेकिन धन्यवाद कहना होगा उन्हें खिलाड़ी के। 15 ओवर का खेल पूरा, स्कोर है 106 रन 9 विकेट के नुकसान पर। Hundred and six it is. 15 overs gone. 106 for 9. 95 required of 30 balls. And the bowler is Shekhar. First over for him. He was brilliant the other day. Was amongst the wicket. And right on the money straight away. Fuller leg delivery, outer edge of the bat. Goes to the fielder at third man. 1 run taken. Strike given back to the batsman Arun. He got to bat after a long time. He was witnessing the inning of Tarun from the North Strikers end so far.
Full toss delivery. Flicked away on the onside. Nobody in the deep. And the ball going into the boundary region for 4. With that boundary, now the score is Nelson. It's 1-1-1 for 9. Good delivery. And batsman playing it defensively. The last wicket partnership proving to be a frustrating one for the Warriors. What a shot! Excellent use of the wrist. They were waiting for the bat delivery. This is excellent batting from Arun Upadhyay. Beg your pardon, it's Tarun Ramachandani who has played that lovely stroke, a lovely flick on the onside, and nothing from the umpire on this occasion. Tarun still looking at both the umpire, and they are unmoved. So that will go down as a dot ball to finish off the over number 16, and the score is 117 for 9. Now they require 84 of 24 balls. They need to score almost 21 runs in an over from here on to get to the home. They need something miraculous from here. Dheeraj is into the attack with his unorthodox action. Not easy to pick the length of the delivery, the way he bowls. The releasing point of his is probably almost below his ear, in fact, and that is the one reason that he doesn't get lots of bounce. The releasing point of a bowler plays a big role. Some bowlers likes to release the ball over the head. Some bowler like Dheeraj is bowling tends to bowl a flatter trajectory delivery, and in this over 4 balls bowled and all 4 balls are dot balls. Arun Upadhyay is swinging his bat, and not on single occasion in this over he has been able to connect one. The 5th ball of this over, outer edge of the bat. Sanu is there at third man. We haven't seen him in action so far. Sanu, an all-rounder, another all-rounder in fact, in the lineup of Warriors. He hasn't bowled a single over yet. Off the pad this time. Once again, Ankit Johri, the wicket keeper, diving to his left, probably getting some hand on the ball. And the fielder Sachin Churi, who was at fine leg, who is standing very fine. Ball goes straight into him. 17 overs completed, 118 for 9. And now this partnership, both the batsmen, they are batting for now more than 5 overs. The last wicket, which fell down, it was in the 12th over. What a shot!
powerfully struck off the back foot. And no need to run for those. Nobody moved on the field. And so good to see from the Thunderbolts. They have not given up yet. Still fighting till the very end. Arun Upadhyay and Tarun Ramachandani, the two batters out in the middle. This partnership of 35 of 33 balls. Shuffles across. And still it's outside the stump. Outside the tram line as well. Brilliant connection. Ball falls just short of the boundary. One bounce into the fence. Once again, a poor delivery. Bowled by Shekhar. And batsman capitalizing on that short delivery. Playing off the back foot. And now after those two back foot shot, we have a change in the field. One fielder going deep at the boundary at extra cover. Four fielders can be seen inside the circle. Fine leg, third man, point, and short cover. Is in the air. Will this be taken? Yes, it will be. Finally, a wicket for Shekhar against the run of play. Another half-taker delivery. Varun was looking to go downtown, but this time outside edge of the bat. It goes high in the air, and the fielder at backward point, Dheeraj, was there. He made no mistake. And it's an all-out for Thunderbolts in 17.4 overs. And once again, it's a big, big victory for Saturn Warriors. They have won this match comprehensively by 73 runs.
All right. Excellent with the ball in hand as well. Is there anything that comes in your mind when you see this wicket? The batsmen tend to take the time on this wicket, but the in your case the thing is different. Right from the ball one, you mean the business. Actually, my captain told me to go and hit every ball, so that is was in my mind. And then when I came, ball was it was coming good for bat. So I just saw that ball, and then I just was hitting. And what happened to your bowling? Like we have seen you bowling with the new ball as a medium pacer or the pacer, but in last few matches we are seeing you bowling as a spinner bowler. Is there anything with your fitness? No, no, nothing has happened. Just I'm trying out on my fitness, and then from past 2 days I'm not well, so that's why I didn't bowl new ball. So I just went on bowling spin. You are not well, but you're still playing like this. One would wonder if you're well, then what would you do to the opponent? Nothing, nothing. It's going on my way. So only because of captain. So he told me go ahead and it, and it's coming on nicely. Thank you, man. All right, then talk to us something about the Mauka 365 Tussle Premier League 5 in 5 for you guys. Tussle Premier League Edition 2. This is the second edition for you as well, or is it the first one? This is my first Mauka tournament, and it's going good. Actually, I thank for the organizers who conducting this tournament. So it's coming good, and that rules and regulations are too different. So main thing that I highlight in this tournament. So bowlers, opening batsmen, they can't bowl, and then bowl only 2 overs. That is the main thing. So everyone will get their natural game. So the tournament is too good, and then we are come on the top, and then let's hope we'll win the tournament. Well, you guys are still at the top, and I wish you all the best in the times to come. Please continue the way you are playing and go well in the tournament. That's all, ladies and gentlemen, from the post-match presentation. And it's a wrap-up here at NL Complex Sports Ground, Daisar East. We will join you on the next Saturday at the same venue in the morning. Do join us. Until then, it's a goodbye.